So, Namaskaram to everyone present here. First, I express my sincere thanks and gratitude to the Honorable Vice Chancellor of Sant Gadge Baba Amravati University, Dr. Milind Barahate sir, Pro Vice Chancellor Dr. Mahendra Dore sir, Dr. Atik sir, Director UGC MMTTC, Professor Ankit Thakur sir, and entire technical team of MMTTC. Not but least to my mentor and guide, Dr. Anil Sahasrabuddhe sir, Chairman, NETF New Delhi. सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को हार्दिक नमस्कार करता हूँ. It gives me immense pleasure to welcome you all to this NEP orientation and sensitization program on a very meaningful and timely theme, that is Indian knowledge system in higher education and its ecosystem. भारत सदियों से ज्ञान और प्रज्ञा की भूमि के रूप में जानी जाती है. हमारे यहाँ कहा गया है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, भौतिक संपत्ति से भी श्रेष्ठ. Our ancestors truly believed in this philosophy and created a vast treasury of intellectual contributions across different disciplines. जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम अर्थात आईकेएस की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे सिविलाइजेशन लीगेसी की चर्चा कर रहे हैं जो विज्ञान, गणित, चिकित्सा, कृषि, वास्तुकला, साहित्य, कलाशास्त्र, भाषाशास्त्र, शासन, दर्शन, इन सबको समेटे हुए हैं. फ्रॉम आर्यभट्टा's concept of zero to सुश्रुता सर्जिकल टेक्निक्स, फ्रॉम चरका's आयुर्वेदिक treatise to वराहा मिहिरा's astronomy, फ्रॉम पाणिनी's ग्रामर टू उपनिषदिक insights on conciseness, यह सब भारतीय विद्वत्ता की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है. इस ज्ञान प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसका होलिस्टिक अप्रोच. साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, बॉडी एंड माइंड, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मैन एंड नेचर, सभी को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया है. उदाहरण के लिए आयुर्वेदा केवल चिकित्सा नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है वेलनेस और बैलेंस के लिए. इसी तरह योगा केवल फिजिकल पोस्चर नहीं है, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन की दिशा में एक यथायोग्य परिपूर्ण मार्ग है. आज के समय में बहुत लोग इस ज्ञान को अलग अलग समझते हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो ये परंपराएं साइंटिफिक, सस्टेनेबल और फ्यूचर ओरिएंटेड है. आज दुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल मेडिसिन, होलिस्टिक हेल्थ की ओर लौट रही है, जो हजारों साल पहले भारत की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था. टुडे इन हायर एजुकेशन वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन डिग्रीज एंड जॉब्स, बट ऑल्सो ऑन वैल्यूज, इनोवेशंस, सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स एंड ह्यूमन वेलबींग. यही भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है. Education with wisdom. Higher education not only focused on skilled professionals, it also creates responsible human beings. The ecosystem of IKS अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा in higher education, which includes teachers who inspire, researchers who rediscover ancient wisdom, institutions that promote interdisciplinary learning, technology that digitize manuscripts, and students who connect traditions with the innovation. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस मूल्य को पहचानते हुए इंडियन नॉलेज सिस्टम को शिक्षा में शामिल करने पर जोर दिया है. इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को हमारी हेरिटेज से जोड़ना और एंशिएंट विजडम को मॉडर्न साइंस से मिलाकर इनोवेशन को बढ़ावा देना है. जैसे अर्थशास्त्र से हमें इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस के नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं, उसी तरह वास्तुशास्त्र सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में हमें मदद कर सकता है और पारंपरिक कृषि पद्धतियां इको फ्रेंडली फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित कर सकती है. एज अ फैकल्टी मेंबर्स हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से विद्यार्थियों में अपनी जड़ों के प्रति गर्व, क्रिटिकल थिंकिंग और नवाचार की भावना विकसित कर सके. लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एंड एडॉप्टिंग फॉर टुडेज नीड्स का यह एक तरीका है. यह फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है. इस सेशन के माध्यम से हम आईकेएस के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझेंगे और यह विचार करेंगे कि इन्हें करिकुलम, पेडागोगी और रिसर्च में कैसे जोड़ा जा सकता है, ताकि छात्रों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके. मुझे पूरा विश्वास है कि यह सेशन न केवल हमारे प्रोफेशनल नॉलेज को समृद्ध करेगा, बल्कि हमें भारत की टाइमलेस इंटेलेक्चुअल हेरिटेज से पुनः जोड़ देगा. पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ज्ञान परंपरा इस शब्द ने वैश्विक लोकप्रियता पाई है, लेकिन इसकी समझ अलग अलग है. इंडियन शब्द का अर्थ वह जो
जो सब अखंड भारत की सीमाओं में उत्पन्न हुआ है। अंततः वे सभी ज्ञान प्रणालियां जो इस भूमि पर विकसित हुई है और हो रही है, जैसे वेदास, इतिहासास, पुराणास, उपनिषास, नाट्यशास्त्र, भगवत गीता, आयुर्वेदा, योगा तथा बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म के ग्रंथ, यह सब भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय परंपरा में नॉलेज केवल एक सूचना नहीं है, बल्कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज और एक्सपीरियंशियल विजडम का परिणाम है। यह रिफाइनमेंट बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स और मेटाकुलस ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। इमेजिन अ स्टूडेंट लर्निंग एआई विथ एथिकल प्रिंसिपल्स फ्रॉम इंडियन फिलोसॉफी। इमेजिन a business students learning entrepreneurship along with the social responsibility from Indian traditions. Imagine healthcare education combining modern medicines with preventive wellness practices from Ayurveda. This is not just education, this is a transformation. As Swami Vivekananda rightly said, that education is the manifestation of the perfection already in man. Our Indian knowledge system reminds us that knowledge is not only for earning money, knowledge is for building character, society, and humanity. So let us proudly reconnect with our roots while moving confidently towards the future. संक्षेप में आईकेएस वह हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो ह्यूमन नेचर और यूनिवर्स के बीच के संबंधों को समझने पर आधारित है। तो आइए हम सब ओपन माइंड, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट के साथ इस सेशंस में भाग लेंगे और इस समृद्ध परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे। सो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नाउ लेट मी अलाउ टू शेयर विद द प्रेजेंटेशन। I hope so the screen is now in full screen mode. Yes. Is it in full screen mode now? And I Yes, am sir. also properly audible, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you. So if you look at this particular collage, तो मुझे यहाँ पे एक भव्य दिव्य स्ट्रक्चर दिख रहा है, आर्किटेक्चर। एक छात्रा योगा परफॉर्म कर रही है, मुझे यहाँ वारली पेंटिंग भी दिख रहा है, मुझे यहाँ ऋषि मुनि छात्रों को पढ़ा रहे हैं, मुझे यहाँ गुरुकुल सिस्टम भी दिख रहा है, मुझे यहाँ भारतीय पारंपरिक खेल भी नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दिख रहे हैं, मुझे यहाँ भारतीय ट्रेडिशनल एक बोर्ड गेम भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पारंपरिक कृषि पद्धतियां, मुझे यहाँ होलिस्टिक मेडिसिन वेलनेस भी दिख रहा है, मुझे यहाँ नाट्य शास्त्र दिख रहा है, मुझे यहाँ पाणिनि द्वारा निर्माण किया हुआ ग्रामर भी दिख रहा है, संस्कृत ग्रामर, मुझे यहाँ टेम्पल आर्किटेक्चर भी दिख रहा है और मुझे यहाँ आर्यभट्ट भी दिख रहा है। सो ऑल द रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, दिस इज व्हाट भारतीय ज्ञान परंपरा। So with this, Bharatiya Gyan Parampara is not restricted or limited to a one subject. There are multiple streams, there are multiple subjects where there is an inculcation of Bharatiya Gyan Parampara, that is IKS. So the NEP 2020 recognized India's treasure of rich traditional knowledge, which includes Gyan, Vigyan and a Jivana Darshana, as it acts as a guiding principles, which is based on experience and experiments. माने हजारों साल पहले जिस ज्ञान की उत्पत्ति भारत में ही हुई है, उस ज्ञान का उपयोग आज हम प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। Indian knowledge system arising out of deep experiences, observation, experimentation, and rigorous validating and putting into practices into the different streams through textual, oral, and artistic traditions. देखिए, why this is important? Because we have to focus on documentation part also. ऐसे काफी सारे कल्चर ट्रेडिशंस है जिनका अभी तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में कहीं तो भी लैकिंग बिहाइंड हो रहे हैं। इसका why I am give ट्रेसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज अगर हम डॉक्यूमेंटेशन इसका प्रॉपर करते हैं, किसी भी परंपरा, ज्ञान या वॉट एवर इन्वेंशंस, इनोवेशंस आर गोइंग ऑन in this particular society, so documentation is important so that the upcoming generations will also be get benefited with this particular documentation. So the Indian knowledge system
refers to the vast and diverse body of knowledge, wisdom and traditions that have evolved over thousands of years within भारत. जिस ज्ञान का निर्माण इस भारत में हजारों साल पहले हुआ है, it encompasses various disciplines including education, philosophy, law, science, mathematics, medicine, literature, arts and governance. माने भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक विषय के लिए सीमित नहीं है. There are multiple subjects, there are different सब्जेक्ट्स की जहां भारतीय ज्ञान परंपरा का समायोजन है. द इंडियन नॉलेज सिस्टम इज डीपली रूटेड इन एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन एंड हैज बीन शेप्ड बाय कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ न्यूमरस कल्चर्स, कि जिसमें कितने तो भी कल्चर का, ट्रेडिशंस का कॉन्ट्रीब्यूशंस है. इतना ही नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसे कुछ ट्रेडिशनल स्कॉलर्स है कि जिनसे ये ज्ञान परंपरा और समृद्ध हुई है. इसके बारे में भी हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. उनके बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम लोग लेने वाले हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि यूजीसी द्वारा जो आईकेएस के संबंध में ड्राफ्ट दिया गया था, उस ड्राफ्ट में भी इन महानुभावों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, जिनके बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं. So academic knowledge in IKS or elsewhere is largely produced by three kinds of studies: documentation, understanding, and applications. Documentation is very important for conservation of any tradition, culture, and knowledge, and that should be transformed from one generation to another generation. Why its understanding is important? Because inquiry and discovery, that is investigation into how, why, and what. Being a human being, we are always curious to know about unknown facts, and that's why it is important. We should get the authentic knowledge, we should disseminate the authentic knowledge. And as far as the application part is concerned, कि how we can apply this knowledge, कि जिसकी उत्पत्ति भारत में हजारों साल पहले हुई है, जिसका आज हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, इस ग्रंथ का निर्माण 3000 साल पहले कौटिल्य द्वारा इस ग्रंथ का निर्माण किया गया है, जिसमें कुछ दो थेरीज ऐसे दिए गए हैं, एक सप्तांग थेरी है, एक मंडल थेरी है, कि दिस दो थेरी बहुत महत्वपूर्ण थेरी और जिसका इस्तेमाल आज भी कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है. इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं. द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं. एंड दिस पर्टिकुलर concepts, theories are still applicable in present times also to solve the contemporary issues. Corresponding to the above three ways of knowledge production, we describe the possible research and teaching projects under the following heads. The very first is document, understand, and its application. Again, projects that document and conserve our heritage for prosperity. Very important. Present them in a innovative ways for mass dissemination. Society में सभी लोगों को इस पर्टिकुलर ट्रेडिशंस, कल्चर के बारे में पता होना जरूरी है. प्रोजेक्ट दैट सीक्स टू गेन मल्टीडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग यूटिलाइज आईकेएस. इसका मतलब ये होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक सब्जेक्ट में लिमिटेशंस नहीं है, सभी सब्जेक्ट में भारतीय ज्ञान परंपरा का अस्तित्व है. और एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज, कंसेप्ट्स, की जिसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले भारत में ही हुई है, उसका इस्तेमाल करके आज हम प्रेजेंट इशू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डियर ऑल पार्टिसिपेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कि भारतीय ज्ञान परंपरा का समायोजन किन किन क्षेत्रों, विषयों और स्ट्रीम्स में है. तो वेरी फर्स्ट इज ट्रेडिशनल नॉलेज इन मैथमेटिक्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, योगा एंड वेदा, प्रिजर्विंग आर्ट्स, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ancient structures and design, astronomy, health and wellness, science, ayurveda, law and governance, traditional agriculture, very important, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स. तो ये एक नया सब्जेक्ट, एक विषय भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका समायोजन किया हुआ है. वो क्यों किया हुआ है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं. देन ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम, दैट इज गुरुकुल सिस्टम, historical and civilization sciences, political, economical and strategic sciences, mechanical engineering, ancient fashion and interior design, social, cultural sciences, culinary and nutritional sciences, fine arts and sculpture, edutainment sciences, speech and linguistics, performing arts, chemical, metallurgical and material sciences, and last one that is very important, वृक्ष आयुर्वेदा. Anybody from the participants, किसी को वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में कुछ जानकारी है? Anybody? Okay, we will discuss in upcoming. That is, Ruksha Ayurveda is literally meaning, we can take it, that is the science of plant life. So this is very important slide. The Indian education system produce great scholar. जिन महानुभाव के बारे में मैं बात कर रहा था और जिनके कंट्रीब्यूशन के वजह से इस
ये ज्ञान परंपरा और समृद्ध हुई है। जैसे चरका, सुश्रुता, आर्यभट्ट, वराहमिहिरा, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चक्रपाणी दत्त, पतंजलि, नागार्जुना, गौतमा, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी, थिरुवल्लुवर, Acharya Kanad, and Maharshi Bharadwaj, who had made inspirational contributions to the world knowledge in various fields such as mathematics, astronomy, metallurgy, medical sciences and surgery, civil engineering, architecture, shipbuilding and navigation, yoga, fine arts, governance and many more. इन सभी महानुभावों ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है उनके वजह से ही ये ज्ञान परंपरा और अधिक समृद्ध हो चुकी है। सो इंडियन नॉलेज विल इंक्लूड नॉलेज फ्रॉम एंशियंट इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मॉडर्न इंडिया। हम इस पारंपरिक ज्ञान का मॉडर्न इंडिया में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। India has a long tradition of holistic and multidisciplinary learning from universities such as Takshashila and Nalanda to the extensive literature of India. हम सब लोग जानते हैं कि तक्षशिला and Nalanda, this is well known for as a epicenter of knowledge। भारत से ही नहीं तो विदेशी से भी यहाँ छात्र आके पढ़ते थे। सो यू कैन इमेजिन कि क्या रिसोर्सेस होते होंगे वहां। तो फैकल्टी मेंबर्स मतलब जिनके वजह से इस ज्ञान का प्रसार प्रचार होता होगा पूरे विश्व में। Incorporating Indian knowledge system in current education system through NEP 2020 helps to recognize and revive this indigenous knowledge system. The National Education Policy of India emphasizes the significance of integrating IKS into the mainstream education curriculum. This is the reason this inclusion is aimed at fostering a deeper understanding and application of India's rich cultural, साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल हेरिटेज अमॉन्ग्स दी स्टूडेंट। इसका मतलब होता है कि मास डिसेमिनेशन होना जरूरी है भारतीय ज्ञान परंपरा का। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आईकेएस इन एनईपी 2020, दैट इज फॉर आईकेएस हेल्प्स फॉर कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन, फॉर होलिस्टिक education, means all round student development, scientific relevance, every concept and theory that has been narrated in IKS having a scientific relevance। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। हर साल हम लोग 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका इन्वेंशन भारत में हुआ है और इट इज हैविंग अ साइंटिफिक रेलेवेंस। इट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड टास्क, interdisciplinary learning, promotion of multi-language, global recognition, problem solving approach, promotion of values and ethics, and for all-round students development. And as far as foster research in the education, I will speak on at the last of this session regarding the research in education. So this is the significance of Bharatiya Gyan Parampara from point of view of NEP. This is the conceptual mapping of IKS interventions in NEP 2020 for school education. NCERT is taking care. For higher education, AICT and UGC has taken a lot of initiatives for the promotion of Bharatiya Gyan Parampara. As far as the research proposals and internship is concerned, and IKS centers and outreach activities, तो for this part also हम लोग आखिरी में इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। So let us explore IKS scholars and their contributions. So we will explore it one by one. The very first is Charaka. Charaka, often referred to as father of Indian medicine, made significant contributions to the field of Ayurveda. His work चरक संहिता, चरका ने चरक संहिता नाम के ग्रंथ का निर्माण किया है। ट्रेटिस माने ग्रंथ is one of the foundational texts of Ayurveda. Charaka categorized diseases into the various groups, and Charaka also introduced the concept of three dosha. So let us explore. This is the pictorial representation of Charaka's contribution in ancient time. So चरक संहिता नाम के ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया है। उन्होंने इसमें त्रिदोषा का कंसेप्ट दिया है। द कंसेप्ट ऑफ त्रिदोषा मीन्स दैट इज द it is very important to keep the balance between vata, pitta and kapha. This is the three dosha. And also in charak sanhita stress the importance of ahara mane diet and vihar mane lifestyle. Definitely ahar and vihar, these two elements are very important for maintaining the good health. So this is what about the charaka's contributions in ancient time, that is charak sanhita नाम के ग्रंथ का निर्माण किया है चरका द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। सो दिस इज व्हाट अबाउट द एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न वेलनेस, दैट इज द foundational principles of eating, which is based on three kinds of
energies, and it is very important to keep the balance between three energies, vata, pitta and kapha, so that we can maintain a good health. If there is an imbalance between three doshas, definitely it will lead to the diseases. Who is number one? Who is regarded as a father of Indian surgery for his contributions in ancient time? Your options are Charaka, Patanjali, Sushruta, Dhanvantari. Participants, please answer this question. Anybody from the participants? Am I audible? Yes, sir. I hope so. The screen is also visible. Yes, sir. Yes. So can anybody from the participants who would like to answer? Who is regarded as a father of Indian surgery? The answer is Sushruta. So let us explore. Yes, Sushruta. So now see, Sushruta, also known as a father of surgery, made significant contributions to the field of medicine, particularly in the domain of surgery. His work, Sushrut Samhita, is one of the oldest known texts on surgery and medicine. Sushruta's work includes detailed anatomical descriptions of human body, including organs, tissues, and bodily structure. So let us explore the पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुश्रुता कॉन्ट्रीब्यूशन. सुश्रुत संहिता नाम के ग्रंथ का निर्माण सुश्रुता ने किया है. इट इज नोन एज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन द फील्ड ऑफ सर्जरी एंड आयुर्वेदा. इस ग्रंथ में 300 से भी अधिक और 120 से भी अधिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है. सो लेट अस एक्सप्लोर. सो these are the instrument that has been narrated in सुश्रुत संहिता, जिसका निर्माण एंशियंट टाइम में सुश्रुता द्वारा किया गया था, एंड that has been used at the time of surgery. Very important contributions that has been done by Sushruta in form of Sushrut Samhita. Next is Aryabhatta. Aryabhatta, an ancient Indian mathematician and astronomer, made several groundbreaking contributions in the field of astronomy. अब देखिए, आर्यभट्टा ने आर्यभट्टिया नाम के ग्रंथ का निर्माण किया है, जो मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है. अब देखिए, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टा, कि आर्यभट्टिया इस नाम के ग्रंथ का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस में है? मैथमेटिक्स की, जिसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ जीरो, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री पे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. एस्ट्रोनॉमी है, जिसमें हेलियोसेंट्रिक हिंट्स, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. पाई अप्रोक्सीमेशन, टाइम एंड कैलेंड्रिकल कैलकुलेशंस के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आर्यभट्टस कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि जिन्होंने आर्यभट्टिया नाम के ग्रंथ का निर्माण किया है, जो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पाई अप्रोक्सीमेशन एंड हेलियोसेंट्रिक आइडियाज, कैलेंड्रिकल कैलकुलेशंस पे आधारित है, और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के बारे में हमें मिलती है. नेक्स्ट, वराह मिहिरा. वराह मिहिरा वाज एन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन, कि जिन्होंने पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता नाम के ग्रंथ का निर्माण किया है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, एग्रीकल्चरल, आर्किटेक्चर एंड व्हाट वी कैन से दैट गेमियोलॉजी के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वराह मिहिरा's कंट्रीब्यूशन अगेन, कि जिन्होंने बृहत संहिता नाम के ग्रंथ का निर्माण किया है, जिसमें हमें प्लैनेटरी मूवमेंट्स, रेनफॉल प्रेडिक्शंस, टेम्पल आर्किटेक्चर, देन टाउन प्लानिंग के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. नेक्स्ट, क्विज नंबर 2. विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट आउटलाइन द 8 limbs of yoga that is known as Ashtanga yoga? Your options are Vedas, Upanishads, Yoga Sutras of Patanjali, Arthashastra. So 8 limbs of yoga की इंफॉर्मेशन हमें किस? Yes, that is Yoga Sutras of Patanjali. So let us explore contributions of Maharshi Patanjali. Patanjali is best known for his compilation of Yoga Sutras, a foundational text of classical yogic philosophy, जिसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं, लाइक एथिकल गाइडलाइंस, फिजिकल पोस्चर, ब्रेथ कंट्रोल, कंसंट्रेशन एंड एनलाइटमेंट के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. दैट इज द 8 limbs of yoga. So the very first limb, that is yama, which focuses on moral values and restraints. Second is niyama, that is the personal discipline. Third is asana, that is physical posture. If you perform the asana, different kinds of asana in an appropriate manner, it will be a result oriented. Then pranayama, breath control activity. Pratyahara, that is withdrawal of senses from the distractions. We are
observing that there are lots of distractions in the society, how we can withdraw ourselves from such a kind of distractions, and how we can have a single focus. Then dharana, concentration on single focus, dhyana, meditation, and last, that is the samadhi, absorption, union with the self. So this is the art and sciences of yoga. If you perform all this activity in an appropriate manner, if you are having a single focus, if you perform meditation, different kind of asana, that definitely it will help to maintain the good health. Next, Bhaskaracharya. Bhaskaracharya, also known as Bhaskar Acharya, was an ancient एमिनेंट मैथमेटिशियन कि जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि इस ग्रंथ का निर्माण किया है, जो लीलावती, बीज गणिता, गोलाध्याय एंड ग्रह गणिता पे आधारित है. नाउ लेट अस एक्सप्लोर देयर कंट्रीब्यूशंस. एज फार एज लीलावती पार्ट इज कंसर्न, which is purely focusing on arithmetic and geometry calculations. Then, as far as Bij Ganita is concerned, that is algebra, that is equations, different kinds of important equations, Goladhyaya astronomy, and Graha Ganita, that is mathematical astronomy. So, very important contributions has been done by Bhaskaracharyas in form of Siddhanta Shiromani. Next, Brahmagupta. Brahmagupta was an ancient influential mathematician and astronomer who lived in ancient India. Brahmagupta's most famous work, that is ब्रह्मस्फूत सिद्धांत. ब्रह्मस्फूत सिद्धांत नाम के ग्रंथ का निर्माण ब्रह्मगुप्त ने किया है. He introduced the concept of negative numbers in the context of solving quadratic equations and providing the rules for adding, subtracting, multiplying, and dividing negative numbers. Very important contributions that has been done by Brahmagupta. So this is the contributions of Brahmagupta इन फॉर्म ऑफ ब्रह्मस्फूत सिद्धांत. ब्रह्मस्फूत सिद्धांत नाम के ग्रंथ का निर्माण ब्रह्मगुप्त ने किया है, जो जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स का जो फर्स्ट सिस्टमैटिक रूल जो दिया है उस ग्रंथ में दिया हुआ है, जो एरिथमेटिक एंड अल्जेब्रा, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड इंटरपोलेशन मेथड को फोकस करता है. नेक्स्ट, महर्षि पाणिनि. महर्षि पाणिनि was a renowned scholar for ancient India, known as a father of Sanskrit grammar. ऑथर्ड दी अष्टादयी नाम के ग्रंथ का निर्माण इन्होंने किया है, जिसमें 4000 से अधिक रूल्स दिए गए हैं संस्कृत ग्रामर के बारे में. डेवलप्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्मल सिस्टम ऑफ ग्रामर इन द वर्ल्ड. इंट्रोड्यूस द रूल बेस्ड लिंग्विस्टिक एनालिसिस सिमिलर टू द मॉडर्न computational model. Very mammoth contributions has been done by Maharshi Panini. Next, Chakrapani Datta. Chakrapani Datta was an ancient Indian scholar and physician. He made a significant contributions in the field of Ayurveda. अष्टांग हृदय नाम के ग्रंथ का इन्होंने निर्माण किया है, जो आयुर्वेदा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है. नेक्स्ट, माधवा. माधवा ऑफ संग्रामा, ऑल्सो नोन एज माधव आचार्य, की जिनका मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. He derived infinite series expressions for pi, which converged rapidly and provided accurate approximations of pi to the many decimal places. Next, Nagarjuna. Nagarjuna, a prominent figure who flourished around 2nd century CE, left an enduring mark on Buddhist philosophy, particularly Mahayana Buddhism. Nagarjuna is considered the founder of Madhyamaka school, also known as a middle way school of Buddhist philosophy. He articulated his idea through his famous work, that is Mula Madhyama Kakakiraka, that is where he used logical reasoning and dialectical analysis to demonstrate the emptiness of all the phenomena. Nagarjuna's contributions to the Buddhist philosophy and his profound insights into the nature of reality continue to be studied and revered by the scholars and practitioners around the world. Next, Sankardev. Sankardev, also known as Mahapurusha Srimant Sankardev, कि जो आसाम से बिलोंग करते हैं, he played a pivotal role in shaping the cultural and religious and social landscapes of Assam. शंकरदेव ने अंकिया नाथ के ग्रंथ का निर्माण किया है, जो डांस और ड्रामा पे आधारित है. His contributions to the literature, music, drama, and social reforms continue to be celebrated and revered by the people of Assam. Next, Maitreyi. Maitreyi was an ancient Indian philosopher. Maitreyi's conversation with Yajnavalkya in Brihadnyaka Upanishad are characterized by her deep philosophical inquiry into the nature. Maitreyi's participation in such a kind of discussion highlights the principle of gender equality in the pursuits of spiritual knowledge and wisdom. Next, Gargi. Gargi Vichaknavi, also known as Gargi, was an ancient Indian philosopher. Gargi's philosophical dialogue with Yajnavalkya contributes to the rich tapestry of Upanishadic thought in ancient time. Then Thiruvallur. Thiruvallur, also known as Vallabur, he was a Tamil poet.
Thiruvallavur's greatest contribution is Thirukkural, which is considered one of the greatest works of classical Tamil literature. Thiruvallavur's ethical philosophy, as elucidated in Thirukkural, emphasized the importance of moral values, integrity, and righteousness in human conduct. He stressed the virtues of honesty, kindness, compassion, humility, and self discipline, advocating for a life guided by ethical principles and moral rectitude. Thiruvallavur's influence extends far beyond the borders of Tamil Nadu, and his teachings have left an indelible mark on Indian and world literature. Next, Acharya Kanad, the founder of Vaishveshvika School of Indian Philosophy. His real name was Kashyap, but he was called Kanada. His major contributions are proposed that atomic theory proposed that all the matter is made up of indivisible particles called अणु. अणु मीन्स मराठीमध्ये ज्याला आपण कण म्हणतो, एक खूपच लहान कण, आणि त्या कणापासूनच यांचं नाव कणाद पडलं की त्याचा अभ्यास केला यांनी. वन ऑफ द अर्लिएस्ट atomic theories in human history. And as far as the Vaishveshvika Sutra is concerned, yeah, Acharya Kanada authored the book Vaishveshvika Sutra, which systematically explain categories of existence. Next, very important, सेज भारद्वाज, जिन्होंने वैमानिका शास्त्र नाम के ग्रंथ का निर्माण किया है, और जो व्हाट वी कैन से दैट एंशिएंट एयरक्राफ्ट के बारे में और प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करता है. और वैमानिका शास्त्र में 4 प्रकार के विमानों का उल्लेख किया गया है. द वेरी फर्स्ट इज शकुना विमान, सुंदरा विमान, रुकमा विमान, त्रिपुरा विमान. So let us explore their structure. I hope so the screen is visible properly and I am also audible. Participants? Yes, sir. Yes, thank you. So these are the 4 types of vimanas that has been very wonderfully narrated in the वैमानिका शास्त्र. वैमानिका शास्त्र नाम के ग्रंथ में इन चारों विमानों का उल्लेख आपको मिलेगा. द वेरी फर्स्ट इज रुकमा विमान, शकुना विमान, त्रिपुरा विमान एंड सुंदरा विमान. सो डियर ऑल पार्टिसिपेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है और ये ज्ञान परंपरा और समृद्ध की है, उनके द्वारा रचे हुए ग्रंथ की लिस्ट आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूं मैं इस सेशन के माध्यम से. जैसे योग सूत्रा नाम का ग्रंथ है जिसका निर्माण पतंजलि ने किया है और जो योगिक एक्टिविटीज पे फोकस करता है, जैसे अष्टांग योगा. वैश्वेश्विका सूत्र जिनका निर्माण कनाडा ने किया है, जो ऑटोमिक थ्योरी पे हमें फोकस करके महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है. ब्रह्म सूत्रा जिसका निर्माण बद्रायन ने किया है. चरक संहिता चरका ने निर्माण किया है. सुश्रुत संहिता जिसका निर्माण सुश्रुता ने किया है, जिसमें हमें सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. अष्टांग हृदया, देन आर्य भट्टिया, ब्रह्म स्फूत सिद्धांता, सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती जिसका निर्माण भास्कराचार्य ने किया है. देन नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा इस ग्रंथ का निर्माण किया हुआ है कि जो डांस, ड्रामा, म्यूजिक इस पे फोकस करता है और हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है. अर्थशास्त्र जिसका निर्माण कौटिल्य द्वारा किया गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो 3000 साल पहले जिसका निर्माण हुआ है, जो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, टैक्सेशन, मैनेजमेंट पे फोकस करता है. इनफैक्ट इट इज अ बुक ऑफ टोटल मैनेजमेंट. देन बृहत संहिता, वराह मिहिरा ने इस ग्रंथ का निर्माण किया है, जो which is known as encyclopedic work which is based on astronomy, astrology and architecture. Then कृषि पाराशरा बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका निर्माण पाराशरा द्वारा किया गया है. इट इज सच अ काइंड ऑफ ट्रेटिस. देखिए, कृषि पाराशरा शाश्वत एग्रीकल्चर मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये ग्रंथ, which focuses on soil types, rainfall predictions, ploughing methods, crop seasons, pest management and importance of cows. Then वृक्ष आयुर्वेदा, दैट इज जिसका निर्माण सुरफला ने किया है, विच इज नोन एज साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट. और जो प्लांट साइंसेस, हॉर्टिकल्चर, एफॉरेस्टेशन, प्लांट डिसीजेस एंड उसके रेमेडीज पे फोकस करता है. देन पंच सिद्धांतिका जिसका निर्माण वराह मिहिरा द्वारा ही किया गया है, जो 5 एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशंस पे बेस्ड है. एंड लास्ट वन दैट इज अष्टाध्यायी जिसका निर्माण महर्षि पाणिनि ने किया है, जो हमें संस्कृत ग्रामर के रूल्स के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान होती है.
So these are the ancient Indian universities, that is Ratnagiri universities, Vikramashila universities, Jagatdala University, Pushpagiri University, Odantapuri University, Somapura University, Nalanda University, Takshashila University, Vallabhi University. So these universities are the epicenters of the knowledge. यहाँ भारत से ही नहीं तो विदेशों से भी छात्र आते थे पढ़ने के लिए. वी कैन इमेजिन कि यहाँ रिसोर्सेस कितने थे, इन फॉर्म ऑफ बुक्स, in form of faculties, very important, that is ancient universities in India. So as a faculty member, what we can do, we can preserve such a kind of traditions through text. हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट. वी कैन रिसर्च. अब जो मैंने ऑलमोस्ट 17 ग्रंथों के बारे में आपको जानकारी दी, कि ऐसे 17 ग्रंथ कि जिसका निर्माण इन महानुभावों ने किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन हम disseminate कर सके. We can collaborate with traditional scholars. We can develop specific courses focusing on IKS, भारतीय ज्ञान परंपरा. अब ये जो 17 बुक्स के बारे में, 17 ग्रंथों के बारे में हमने जानकारी हासिल की, तो अगर किसी को, जैसे आपका ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है एंड यू हैव टू डेवलप सिलेबस ऑन कंसिडरिंग दी भारतीय ज्ञान परंपरा IKS, तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को. आप कौटिल्य अर्थशास्त्र फॉर मैनेजरियल एक्सेलेंस, ऐसा अगर मेरे सिलेबस का टाइटल है, सो आई कैन frame the Kautilya's Arthashastra particular subject on the title Kautilya's Arthashastra for Managerial Excellence. So 3000 साल पहले इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है. So उसमें जो प्रिंसिपल्स आज मैनेजमेंट के हमें दिखाई देते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग सीखते हैं, उसमें दो थेरीज ऐसी दी गई है, एक सप्तांग थेरी और सेकंड इज मंडल थेरी. सप्तांग थेरी हम लोग आगे चल के देखने ही वाले हैं, जो आज भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जिसका अस्तित्व है और इस्तेमाल भी की जाती है. वी कैन इन्फ्यूज IKS इनटू एग्जिस्टिंग कोर्सेस यूजिंग ऑथेंटिक एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. जो ग्रंथ के बारे में मैंने आपको अभी रेफरेंसेस दिए हैं, उसमें ही आपको ऑथेंटिक सोर्सेस मिलेंगे. देन वी कैन डिसिमिनेट नॉलेज थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज. हम लोग नॉलेज डिसिमिनेट करने के लिए एक्टिविटीज भी ले सकते हैं, लाइक पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन, देन सेमिनार्स, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. वी कैन ट्रेन द टीचर्स लाइक ऑन सच अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. So these are the elements of IKS, that is education. Through education, we can develop different courses which is purely focusing on IKS part. Then mentoring, we can guide students on different aspects of IKS. We can conduct different kind of activities to popularize IKS, like paper presentation, poster presentation, then seminars, symposium, like many more. And as far as research part is concerned, so आखिरी में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So these are another elements which are very important. The very first is दृष्टि, परंपरा and लौकिक प्रयोजना. अब देखिए, दृष्टि दृष्टि से हमें डायरेक्शन मिलता है, बट दृष्टि हमें कैसे मिल सकती है, हाउ वी कैन गेट इट. सो अराइजिंग फ्रॉम डीप एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिगरस एनालिसिस. जब हम किसी भी विषय का डीप एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रिगरस एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक डेफिनेट डायरेक्शंस मिलता है, एंड दैट डेफिनेट डायरेक्शंस इज दृष्टि, द यूनिक पर्सपेक्टिव्स दैट मेक्स दिस नॉलेज सिस्टम इंडियन एंड वैल्यूएबल टू द वर्ल्ड. देन परंपरा, ट्रांसमिटेड थ्रू टेक्सचुअल, ओरल और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन. डेफिनेटली, जो मैंने पहले ही कहा था कि इन सभी परंपरा, कल्चर का अगर हमने डॉक्यूमेंट कर लिया किताबों के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से, तो आने वाली जनरेशन तक ये पहुंच सकता है प्रॉपर तरीके से. कुछ ट्रेडिशंस ऐसे होती है कि जो ओरली होते हैं, जैसे हमें हमारे दादी जी से भी कुछ ट्रेडिशंस के बारे में ओरली ही पता चलता है, और वो हम लोग फॉलो करते हैं. लाइक वी हैव टू मेक द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस इन एनी इंडियन, भारतीय भाषा में हम लोग इसे कर सकते हैं. एंड लास्ट वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लौकिक प्रयोजना, दैट इज प्रैक्टिस्ड इन एजुकेशन, आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन. माने भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक विषय के बारे में सब, जिसका लिमिट नहीं है, उसका स्कोप बहुत बड़ा है. लौकिक प्रयोजना, जिस ज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले भारत में हुई है, उस ज्ञान का इस्तेमाल हम आज प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं, दैट इज नोन एज लौकिक प्रयोजना. द प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू सॉल्व द करंट एंड इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, दैट इज लौकिक प्रयोजना. सो दृष्टि, परंपरा एंड लौकिक प्रयोजना is very important and related with the Jnana, Vigyan and Jivana Darshana. So these are the important elements of Bharatiya Gyan Parampara. So about the guidelines, we are all aware. So let us explore the
case study wise Bharatiya Gyan Parampara IKS in NEP 2020. So let us explore science. As far as science faculty, science stream is concerned, so Bharatiya Gyan Parampara arthat IKS have made a significant contributions to the different branches of science, including mathematics, astronomy, medicines and environmental sciences. जो हम लोगों ने अभी पहले ही जो महानुभाव ने उनके द्वारा ये ज्ञान परंपरा ग्रंथों के माध्यम से और अधिक समृद्ध की है, उनके बारे में हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है. सो लेट अस एक्सप्लोर नेक्स्ट. So this is the new concept, Pancha Mahabhuta model for personality identification. So Pancha Mahabhuta means there are 5 kinds of elements: fire, water, sky, air, and earth. Now see the concept. I will explain in very brief manner because of time limitations. किसी पर्सन में, किसी भी पर्सन में अगर आपको ये क्वालिटीज नजर आती है तो वी कैन से दैट फायर एलिमेंट इज डोमिनेटिंग एलिमेंट as compared to the other all elements in his personality. अब देखिए, the very first is fire element. The talent that fire element hold, turning ideas into the action, strategic person, always aggressive person, inspire, achieve, purify, intelligence, sharpness and intense. अगर ये क्वालिटी हमें किसी पर्सन में दिखती है तो वी कैन से दैट फायर एलिमेंट इज डोमिनेटिंग एलिमेंट इन हिज पर्सनैलिटी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. वाटर एलिमेंट, फ्लो टू द राइट डायरेक्शन, टेक एवरीवन टुगेदर, नर्चर, क्रिएटिव, इमोशनल, टीम प्लेयर. अगर ये एलिमेंट मुझे नजर आता है तो आई कैन से दैट दिस एलिमेंट इज डोमिनेटिंग एलिमेंट. Next, that is the earth element. That is the lots of hidden resources, nurture, teamwork, grounded, process oriented, territorial means flexible. अगर ये क्वालिटीज मुझे दिखती है तो आई कैन से दैट अर्थ एलिमेंट इज डोमिनेटिंग एलिमेंट. देन स्पेस एलिमेंट, दैट इज विजनरी, स्पिरिचुअल, accommodating everyone, innovations, imaginations, open for new ideas, hold everyone together. अगर ये क्वालिटीज मुझे दिखती है तो आई कैन से दैट स्पेस एलिमेंट इज डोमिनेटिंग एलिमेंट. एंड लास्ट दैट इज एयर एलिमेंट, movement, change, innovations, dreams, communication, imagination, enthusiasm. अगर ये क्वालिटीज मुझे दिखती है तो आई कैन से दैट एयर एलिमेंट इज dominating element as compared to other all respective elements. So this is what about Pancha Mahabhuta model. And again I am telling that this Pancha Mahabhuta is very important. देखिए, the very first element is Akash element, which is focusing on body cavities and which is related with the body cavities and conciseness. Vayu element, which is related with the respiration, circulation and nerve impulses. Agni element, which is related with the digestion, metabolism and body temperature. Jala element, which is related with the blood, plasma and all bodily fluids. And last, that is Prithvi element, which is related with the bones, muscles, teeth and solid structure of the body. And all these 5 elements are again related with the 3 kinds of energies which earlier we have already discussed, that is Vata, Pitta and Kapha. So that's why this particular Pancha Mahabhuta is very important. Next, engineering. In the field of engineering, particularly we are focusing now stream wise analysis. So as far as engineering is concerned, so Bharatiya Gyan Parampara had made a significant contributions in the field of architecture, civil engineering, water management and sustainable construction practices. As far as architecture is concerned, so examples of Indus Valley civilization of Harappa and Mohenjo-daro, the rock-cut cave temples of Ajanta and Ellora, and monumental temples of Khajuraho and Hampi demonstrate the advanced architectural principles and engineering techniques. So let us explore. देखिए, अब आपको यहाँ स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, दिस इज द मैप ऑफ मोहनजोदड़ो. अगर मैं ये मैप बहुत ध्यान से देखता हूं तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर टाउन प्लानिंग नजर आ रहा है. मुझे यहाँ वॉल टू वॉल कंस्ट्रक्शंस दिख रहा है, रोडवेज भी दिख रहे हैं, लाइक एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ लिविंग एरियाज भी दिख रहा है. सो दिस इज द एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ ancient architecture in India. So this is the drainage system of Indus Valley civilizations की जहां से पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल होता था. नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होता था. तो यहाँ पे 3 प्रकार के टैंक दिए हैं, टैंक ए, टैंक बी एंड टैंक सी. टैंक ए इज अ ब्रिक लाइन टैंक विच वॉज फिल्ड विद द वाटर. सबसे पहले टैंक ए में पानी भर जाएगा, that can be the water, rain water or that can be the river water, right? कि जो टैंक ए में स्टोर हो जाएगा. देन इट मूव टुवर्ड्स द टैंक बी.
अब वो टैंक बी में जाते समय ही द वाटर विल बी क्लीन, एंड फ्रॉम टैंक बी इट विल मूव टुवर्ड्स सर्कुलेट टुवर्ड्स टैंक सी, की जहां से अदर एरियाज में वाटर सर्कुलेट होता था, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम लोग गंगा रिवर के साइड का फिगर देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले सिल्टिंग चेंबर में पानी आ जाएगा, वहां से टैंक ए, फिर टैंक बी और टैंक सी, और एक्सेस वाटर वापस गंगा रिवर में चला जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे इस कोलाज में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो स्टोन है वो कार्विंग करके, अगर बारिश का पानी भी इस पे आता है, गिरता है, तो वो इधर उधर न जाते हुए प्रॉपर तरीके से स्टोरेज के इसमें ही चला जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। So this is the very giant, that is the step wells has found in the different parts of the India, particularly in Rajasthan, in Gujarat, right? अगर आप ये पिक्चर ध्यान से देखते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन सभी स्ट्रक्चर को हजारों साल हो चुके हैं। इमेजिन दैट कि जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो देयर वेर नो जेसीपी, देयर वेर नो मॉडर्न इक्विपमेंट, ओनली बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, कि इन्होंने इतना भव्य दिव्य निर्माण किया है इन एंशियंट टाइम, और ये स्टेपवेल्स आज भी वैसे की वैसी है। सो दिस इज द एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, देन सिविल इंजीनियरिंग। Ancient Indian civilization developed sophisticated system of urban planning, water management, and sanitation. The constructions of complex drainage system, reservoirs, canals, and irrigation networks in cities such as Mohenjo-daro and Dholavira attest to the advanced civil engineering knowledge of ancient Indians. अब देखिए यहाँ पे धोलावीरा जो गुजरात में उत्खनन में इस हमें ये शहर नजर आया, ये प्लेस नजर आई, तो यहाँ पे मैं लिविंग एरिया भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी मुझे दिख रही है, यहाँ मुझे मेन एंट्री गेट भी दिख रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंशियंट सिविल इंजीनियरिंग इन धोलावीरा। नाउ सी टेम्पल आर्किटेक्चर। देखिए भारत में तीन प्रकार का टेम्पल आर्किटेक्चर हमें दिखता है। फर्स्ट इज नगर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, सेकंड इज द्रविड़ स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, थर्ड इज वेसर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। सो लेट अस एक्सप्लोर। जो आपको पहले डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द नगर स्टाइल आर्किटेक्चर। सेकंड इसमें जो दिख रहा है दैट इज द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर। थर्ड इसमें जो नजर आ रहा है मुझे वो है वेसर स्टाइल आर्किटेक्चर। सो लेट अस एक्सप्लोर। कैन यू कैन एनीबडी प्रेडिक्ट, कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर कि ये मंदिर कौन सा है और कहाँ पे है? एनीबडी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? ये इतना भव्य दिव्य मंदिर कहाँ है भारत में, कोई बता सकता है पार्टिसिपेंट्स? पार्टिसिपेंट्स, आर यू विथ मी? Yes, sir. यस। सो दिस इज द टेम्पल ऑफ बृहदेश्वरा, जो तमिलनाडु के तंजावर डिस्ट्रिक्ट में है। और इस टेम्पल की खासियत यह है कि इसको आज 1000 साल हो चुके हैं, और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको इंक्लूड किया हुआ है। आज 1000 साल हो चुके, इतना भव्य दिव्य टेम्पल है ये। और इसका आर्किटेक्चर ऐसे हुआ है कि ये इंटरलॉक सिस्टम, इसके इसके निर्माण के वक्त इंटरलॉक सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। मतलब आप लोग पजल जानते हो, पजल के हर पार्ट एक मतलब एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, वैसे ही बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल करके इंटरलॉक सिस्टम से ये जुड़ा हुआ है। और Oh, आज ऐसे के ऐसे ही ये जायंट पोजीशन में है, और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, दैट इज बृहदेश्वरा टेम्पल। अब ये सेकंड स्क्रीन पे जो टेम्पल नजर आ रहे हैं आपको, दीज आर ऑल टेम्पल लोकेटेड इन हम्पी, विच इज नोन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल। और यूनेस्को के जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हम्पी में मौजूद है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द बृहदेश्वरा टेम्पल। नेक्स्ट इज मेटलर्जी। अब देखिए इंडियन मेटलर्जिस्ट मास्टर टेक्निक्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग, स्मेल्टिंग एंड अलॉइंग मेटल्स, प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ऑफ स्टील, आयरन एंड ब्रॉन्ज। रस रत्नाकरा और अर्थशास्त्र, ये दो जो ग्रंथ है, इसमें हमें मेटलर्जी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब देखिए ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहला पिक्चर दिख रहा है, ये है एक पिलर है, आयरन पिलर। कोई बता सकता है ये पिलर कहाँ है? एनीबडी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? अब देखिए ये जो पिलर है,
दिस इज नोन एज आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। अब ये पिलर की खासियत ये है कि ये रस्ट रेजिस्टेंट पिलर है। आज तक इस पे व्हाट वी कैन से दैट रस्ट नहीं हुआ है ये पिलर। और भारत से ही नहीं, विदेशों से भी साइंटिस्ट आके इस पिलर का स्टडी करके गए हैं कि ऐसे कौन से मेटल का कॉम्बिनेशन द्वारा इस पिलर का निर्माण किया गया है कि जिसमें रस्ट रेजिस्टेंट की क्वालिटी अभी भी है और वो पिलर आज भी वैसे का वैसा है। दिस इज द व्हाट वी कैन से दैट इन्वेंशन that has been very wonderfully narrated in Bharatiya Gyan Parampara with respect to metallurgy. So let us explore as far as the textile part is concerned. India has a rich tradition of textile production dating back thousands of years. Traditional Indian textile such as cotton, silk, wool, jute are renowned for their quality, diversity and craftsmanship. Indian textile artisans develop sophisticated techniques for spinning, weaving, dyeing, printing and embellishing fabrics. Textile production centers such as Varanasi, Kanchipuram and Jaipur कंटिन्यू टू बी हब्स ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट्समैनशिप एंड इनोवेशंस। अब देखिए, आपको जो स्क्रीन पे पिक्चर एक नजर आ रहा है, दिस इज द एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ इंडियन टेक्सटाइल जिसका निर्माण हाथों से किया गया है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आपके ही डिस्ट्रिक्ट में येवला प्लेस है कि जो जहाँ पे महाराष्ट्र का महावस्त्र दैट इज पैठनी का निर्माण होता है, राइट। और सबसे पॉपुलर दैट इज अमॉन्ग वन ऑफ द इन एंटायर भारत हम लोग कह सकते हैं और वर्ल्ड में भी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पैठनी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज एग्रीकल्चरल। बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशंस वी आर concentrating on significant topics only. Traditional Indian agricultural practices emphasize the sustainable farming method, crop diversification and water management techniques. Indian सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कृषि पाराशरा और वृक्ष आयुर्वेदा ये दो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, विच कंटेन वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप रोटेशन, पेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। नाउ लेट अस एक्सप्लोर दीज आर द एंशिएंट एग्रीकल्चरल टूल्स कि जिसका निर्माण एंशिएंट समय में खेती में किया जाता था। एंड मैक्सिमम एग्रीकल्चरल टूल्स ये वुड और आयन से बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं। नेक्स्ट, हैंडीक्राफ्ट्स दैट इज हस्तकला जिसे बोल सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कि यहाँ आपको स्टोन कार्विंग दिख रहा है, एग्जांपल ऑफ स्टोन कार्विंग, देन मेटल कार्विंग। यहाँ पे आपको एक क्लोथ कार्विंग का एग्जांपल है कि क्लोथ पे कुछ तो भी डिजाइन हाथों से बुनाया गया है। देन लास्ट वन दैट इज दी वुड कार्विंग। सो हर क्षेत्र में भारत के हर क्षेत्र में व्हाट वी कैन से दैट हर रीजन में एक हैंडीक्राफ्ट का खुद का एक ऐतिहासिक धरोहर है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वृक्ष आयुर्वेदा। अब देखिए यहाँ पे व्हाई वृक्ष आयुर्वेदा इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज वृक्ष आयुर्वेदा। सो इट इज लिटरली ट्रांसलेटेड एज अ साइंस ऑफ प्लांट लाइफ। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि वृक्ष आयुर्वेदा बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस। कौन से गाइडलाइंस किसके लिए? फॉर कल्टीवेशन, maintenance and management of trees, plants and forest. Vriksha Ayurveda encompasses a wealth of botanical knowledge about various plant species, their properties, growth habits and environmental requirements. The text contain detailed descriptions of medicinal plant, fruit, trees, timber, spices and ornamental plants along with their uses in the agricultural, medicine and other applications. Vriksha Ayurveda provides practical guidance on the cultivation of trees and plants, including site selection, soil preparation, planting methods, irrigation techniques, and pest management strategies. The text emphasizes sustainable agricultural practices and ecological principles to ensure that the long-term health and productivity of cultivated landscapes. Vriksha Ayurveda offers insights into the forest management practices, including the conservation and sustainable utilizations of forest resources. It also provides guidelines for the protections of forest, the regulation of timber extractions, the maintenance of biodiversity, and the promotion of forest-based livelihoods. Now see, Vriksha Ayurveda also contains extensive information about medicinal plants and their therapeutic properties. It classifies plants based on their medicinal uses
and provide instructions for the collection, processing, and preparation of herbal remedies. Now, this is what about the short, what we can say that the nature's pharmacy. अब देखिए यहाँ पे नीम, अर्जुना, बनियान, आंवला, पीपल और बेल, ये बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है इनमें. जैसे एज फार एज नीम इज कंसर्न, इट्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अर्जुना, द हार्ट गार्डियन. देन बनियान, द एंटी इंफ्लेमेटरी characteristics. Then amla, which is rich in vitamin C, the immunity booster. Then people act as an respiratory healer, and bale, that is for digestive aid. So this is what there are thousands of trees are there which contain medicinal properties, and that has been narrated in Vruksha Ayurveda treatise माने ग्रंथ. नेक्स्ट, आईकेएस इन एस्ट्रोनॉमी, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत जानकारी हासिल कर दी है. सो दिस इज द प्लेस जंतर मंतर विच इज लोकेटेड इन जयपुर. इस प्लेस का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी के एनालिसिस और एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शंस और प्लैनेटरी पोजीशंस का स्टडी करने के लिए होता है. दैट इज द जंतर मंतर इन जयपुर. नेक्स्ट, आईकेएस इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस. Indian philosophy encompasses diverse school of thoughts, including Vedanta, Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaishveshvika, and Mimamsa. This philosophical system explore fundamental questions about the nature of reality, conciseness, ethics, and purpose of life. They provide profound insights into metaphysics, epistemology, ethics, and spirituality, including philosophical discourse, influencing philosophical discourse both in India and globally. Indian literature is renowned for its richness, diversity, and depth. The classical Indian literature includes Ramayana and Mahabharata, as well as Sanskrit works by Kalidasa, Bhasa, and Valmiki. Very important contributions that has been done by Kalidasa, Bhasa, and Valmiki. The Indian linguistic has a long and distinguished history dating back to the ancient texts such as Panini's Ashtadhyayi and Nirukta. Panini's grammar is considered one of the earliest and most comprehensive grammatical treatise in the world. Now let us focus on next part, that is IKS in holistic medicine and wellness. I'm trying to cover the different kind of streams as far as where there is a presence of Bharatiya Gyan Parampara. Next, that is the IKS in holistic medicine and wellness. Ayurveda, the traditional system of medicine in India, is one of the oldest and most comprehensive system of healthcare in the world. Yoga is profound system of spiritual and physical practices, जिसके बारे में already हमने discuss किया है. Then Indian culinary traditions emphasizes the use of fresh seasonal ingredients and as far as balanced meal, जिसे हम लोग हमारी जो खाद्य संस्कृति है और जिसके बारे में भी आयुर्वेदा में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, डायटरी प्रैक्टिसेस, आहार एंड विहार के बारे में. देन आयुर्वेदिक हर्ब्स such as turmeric, ginger, ashwagandha, and tulsi are renowned for their therapeutic properties and health benefits. Now see, these are the medicinal plant that is like aloe vera, tulsi, mint, coriander, basil, fenugreek, fennel, ginger, rosemary, and turmeric, जिसका इस्तेमाल medicine as a medicine, because these are all known as a medicinal plant with appropriate medicinal properties, and that is useful for maintaining good health. Next, very important and new, that is भारतीय ज्ञान परंपरा in भारतीय ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स. अब देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो मैं अभी भारतीय ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, और कुछ ऐसे खेलों के नाम मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आप कुछ खेल पहली बार सुनेंगे. India has a rich diversity of indigenous sports and games that have been played for centuries in different regions of the country. The traditional games such as Malkham, Lathi Kathi, Baneti, Danpatta, Dhal Talwar, Lezim, Dumbbells, Jambia, Bhala, Vita Bhala, Farigatka, Danda Baitak, Kabaddi, Kho-Kho, Gilli Danda, Lagori, Rassi Khech, Langdi, Ata Patya, Surkathi, Gofand, Dhanur Vidya, Malla Vidya Shastra, Binod, Bothati are played across India. ये सभी खेल भारत में खेले जाते हैं.
providing recreational entertainment and promoting physical fitness, teamwork and social interactions. अब आइए देखते हैं हम इस खेल को वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट इज मलखाम. अब मलखाम के दो प्रकार है, एक है सरफेस मलखाम जिसका डेमोन्स्ट्रेशन ग्राउंड पे किया जाता है, और सेकंड इज वाटर मलखाम जो पानी पे किया जाता है. इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो पूरे विश्व में सिर्फ हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती ही परफॉर्म करता है, वाटर मलखाम. नेक्स्ट इज बनेटी, दैट इज रिलेटेड विद दी वी कैन the picture itself indicate the particular sports, that is baneti. लाठी खाटी सब लोग जानते हैं. दानपट्टा, the very flexible sword which is used in war and as well as for in traditional sports and games. then ढाल तलवार सब लोग जानते हैं. डम्बेल्स कि जिसका निर्माण मतलब लकड़ी से हुआ है, वुड, इट इज मेड अप ऑफ वुड. और फॉर ऑल राउंड स्टूडेंट डेवलपमेंट, स्कूल एजुकेशन में कुछ कवायतें की जाती है विद द हेल्प ऑफ डम्बेल्स फॉर मेंटेनिंग गुड फिजिकल हेल्थ. देन लेजिम, महाराष्ट्र की संस्कृति एक ही है, जब कभी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो वी ऑलवेज यूज टू परफॉर्म लेजिम. देन विटा भाला. विटा भाला इज सच अ काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से दैट ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स की जिसमें ये जो भाला रहता है इसे एक लकड़ी रहती है और लकड़ी को एक रस्सी से बांधा जाता है. जब एनिमीज की तरफ फेंका जाता है तो उसी रस्सी से उसे वापस लिया जाता है, दैट इज दी विटा भाला. नेक्स्ट फरीगत का, जस्ट लाइक योर ढाल तलवार. कबड्डी सब लोग जानते हैं. गिल्ली डंडा, दैट इज विटी दांडू, वेरी पॉपुलर. खो खो, अब खो खो के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले 1930 में बर्लिन में जो ओलंपिक हुआ था तो उसमें खो खो का पहला मेडल हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पास है, क्योंकि एचयूपीएम से एक टीम बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. 1930 की बात है, और उसमें इस पर्टिकुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में भारत का पहला मेडल ओलंपिक्स में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पास है इन खो खो. नेक्स्ट लगोरी, जिसे कुछ स्टेट में लिंगोरचा भी कहते हैं. वी आर ऑल अवेयर विद दिस. आटा पाट्या, गोफन, लंगड़ी. देन धनुर्विद्या, रामायण और महाभारत काल से ये पारंपरिक विद्या चलती आ रही है और आज ओलंपिक्स में भी आर्चरी के नाम से जानी जाती है. देन बोथाटी इंटरनेशनल, इसमें इसे पोलो कहते हैं. देन मल्ल विद्या शास्त्र एंड कलारी पयाट्टू. कलारी पयाट्टू का भी सेंटर है भारतीय ज्ञान परंपरा का आईकेएस डिवीजन का इन त्रिवेंद्रम, विच प्रमोट्स कलारी पयाट्टू. So why these Bharatiya traditional sports and games are very important and significant? The reasons are कि it helps for cognitive skill development, then help for social skill development, it helps for motor skill development, it helps as an problem solving skills, it promotes out of the box thinking, cultural awareness, it creates the cultural awareness. सबसे महत्वपूर्ण रीजन है फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि कोई भी खेल हमें अगर खेलना है तो टीम में खेलना है एंड आई हैव टू लीड द टीम, सो इट ऑटोमेटिकली क्रिएट जनरेट लीडरशिप स्किल्स. देन मेंटल रिसिलेंस और स्ट्रेस बूस्टर, कि स्ट्रेस से रिलैक्स होने के लिए भी इस खेलों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है. एंड एवरी स्पोर्ट्स हैविंग एनवायरमेंटल कलेक्शंस. आज वी आर ऑल अवेयर कि यंग जनरेशन इज स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, मोबाइल पे ही रहती है. अगर उनको वहां से बाहर लाना है, सो भारतीय ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, दैट इज आईकेएस इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, that is the study of on governance and public administration, the strategic leadership in ancient India. Chhatrapati Shivaji Maharaj. Chhatrapati Shivaji Maharaj, also known as Shivaji Shahaji Bhosle, was born on 19 Feb 1630 in the hill Fort Shivneri near city of Junnar, India. Chhatrapati Shivaji Maharaj was greatly remembered for his powerful warrior code of ethics and a reputed symbol of character. Chhatrapati Shivaji Maharaj is one of the greatest organizers in the history of the world and was also an outstanding military strategist, a skillful diplomat, and an enlightened administrator. These are the leadership qualities we can learn from Chhatrapati Shivaji Maharaj: honesty and faithfulness, leading with emotional intelligence, creating a strong foundation for future generations, good communication to construct a stable framework of trust, innovative thinking, teamwork, respectful. I request participants. सुवर्णा मॅडम, प्लीज तुमचा माईक बंद करा. सुवर्णा मॅडम. Participants are requested to please mute your mouth.
ती मला काहीच नाही बोलणार, ती ना सुवर्णा तिच्यासाठी मॅडम, बोलतच तुमचा नाही. माईक ती प्लीज नुसती बंद ओरडते करा. माझ्यावर, आणि ती ना लई शांत आहे, ती मला काहीच म्हणणार नाही. So next is innovative thinking, आणि ती मला teamwork, काहीच म्हणणार respectful, नाही. ओरडत नाही. inspirational, great vision, fair administration, strategic thinking, that is the Ganimi Kawa. So these are the leadership qualities: strategic management, ahead of time thinking, motivation, patience, proper judgment, ethical practices, delegation, multitasking, total alertness. So these are the leadership qualities we can learn from Chhatrapati Shivaji Maharaj. So let us explore, let us focus on Ashtapradhan Mandal. The Ashtapradhan Mandal of Chhatrapati Shivaji Maharaj was a council of 8 ministers that assisted in the administration of his kingdom in the 17th century. The members of the council were responsible for different aspects of kingdom's governance, such as finance, military, legal affairs and diplomacy. The council was also known as 8 ministers, that is Ashtapradhan Mandal. So these are the roles and responsibilities. Peshwa was responsible for overall administrations of the kingdom. Amatya was responsible for treasury and finances. Sachiv was responsible to keep an eye on all outgoing and incoming correspondence and land revenue transactions. Mantri was responsible for the daily routine work. Senapati, all the armies of the Swarajya were under the command of generals. Sumanta, he was the foreign ministers of the Swarajya. Nyayadhish was responsible for the justice system and maintaining the law and order. And Pandit Rao Danadhyaksha was responsible for religious and moral instructions. So this is the composition of Ashtapradhana Mandal of Swarajya. These are the management lessons we can learn from Chhatrapati Shivaji Maharaj. That is the strategic thinking, leadership skills, character, strategic planning, courage and resilience, fair administration, fearlessness, division of work, empowerment, decentralization, fair remuneration, strong governance, and trust of building. Then strategic alliances and people's networks. Very important management lessons we can learn from Chhatrapati Shivaji Maharaj. So these are the 12 designated UNESCO's World Heritage Forts कि जो डिक्लेयर किए हैं यूनेस्को ने. उसमें से 11 फोर्ट्स महाराष्ट्र में हैं और एक फोर्ट तमिलनाडु में है. दैट इज रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, पान्हाळा फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट, सिंधुदुर्ग फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, कांधेरी फोर्ट एंड साल्हेर फोर्ट जो महाराष्ट्र में है. एंड वन इज तमिलनाडु, दैट इज जिंजी फोर्ट. So these are the fort won under the leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj, that is Pratapgarh, Raigad, Lohgarh, Rajgarh, Sindhudurga, Shivneri, Vijayadurga, Sinhgarh and Torna. Next strategic leadership in India, that is Kautilya's Arthashastra. Chanakya was an ancient Indian polymath who was active as a teacher, author, strategist, philosopher, economist, jurist and royal advisor. He is traditionally defined as a Kautilya और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं. उन्होंने अर्थशास्त्र इस ग्रंथ का निर्माण किया है जिसमें 15 प्रकार के बुक्स हैं, 150 चैप्टर्स है और 6000 सूत्रस है. इनफैक्ट इट इज अ बुक ऑफ टोटल मैनेजमेंट. सो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो कि अर्थशास्त्र की आउटलाइन क्या है. तो ये 15 प्रकार की बुक्स हैं, विनयाधिकरण से लेके तंत्र युक्ति तक. सो दीज आर द 15 बुक्स दैट हैज बीन narrated very well in the Arthashastra. So these are the qualities we can learn from Kautilya, that is great teacher, visionary, strategic thinking, deep thinker, ideal philosopher and leadership. So in Kautilya's Arthashastra, it is very well narrated that is Sukhasya Moolam Dharma, Dharmasya Moolam Artha, Arthasya Moolam Rajya, Rajasya Moolam Indriya Jaya, Indriya Jayasya Moolam Vinaya and Vinayasya Moolam Ruddhopaseva. The root of happiness is Dharma, means doing the right thing. The root of Dharma is the Artha. The root of Artha is right governance, and the root of right governance is victorious inner restraint. The root of victorious inner restraint is humility, and the root of humility is serving the aged. That has been very wonderfully narrated in Kautilya's Arthashastra. Now, जो थ्योरी के बारे में मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि जिसका इस्तेमाल हम लोग आज भी करते हैं इन कॉर्पोरेट सेक्टर, दैट इज सप्तांग थ्योरी, राइट? सो लेट अस एक्सप्लोर. These are the elements of Saptanga theory. That is the Saptanga theory. As far as the very first element is Swami, Amatya, Janapada Durga, Treasury, Danda, Ali. So these are the elements of Saptanga theory. Now, how it explore? Let us explore. So the very first element of Saptanga theory is Swami. Swami का मतलब होता है king
और मॉडर्न मैनेजमेंट में उसे लीडर कहते हैं। देन अमात्य द मिनिस्टर, मॉडर्न मैनेजमेंट में उसे मैनेजर कहते हैं। जनपद द कंट्री योर मार्केट, दुर्ग फोर्टिफाइड सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं मॉडर्न टाइम में। कोशा जिसे ट्रेजरी कहते हैं और मॉडर्न टाइम में उसे फाइनेंस कहते हैं। दंड द आर्मी योर टीम, एंड मित्र द एली मीन्स मेंटर। अब आइए देखते हैं हम लोग कि व्हाई सप्तांग थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सप्तांग थ्योरी इज स्वामी, which refers to the king. In modern management, Swami can be interpreted as a leadership, right? So the leader is visionary, the captain who guides the organization. In today's corporate world, we can call him as a chairman, director, or CEO. Means Swami, जिसे हम लोग राजा कहते हैं, अब in modern time उसे चेयरमैन, डायरेक्टर और सीईओ कहते हैं कि हु इज लीडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। देन रोल ऑफ टीम वर्क। द सेकंड एलिमेंट ऑफ सप्तांग थ्योरी इज अमात्य, विच इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड एज फार एज मिनिस्टर आर कंसर्न, मॉडर्न टाइम में उसे मैनेजर कहते हैं। द मैन ऑलवेज इन एक्शन, द मैनेजर इज अ पर्सन हु रन्स द शो, second in command in the organization. Then territory management. The third element of Saptanga theory is Janapada, which refers to the your market. और वी आर ऑल अवेयर कोई भी बिजनेस मार्केट के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। नो बिजनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट इट्स मार्केट्स। दैट्स व्हाई टेरिटरी मैनेजमेंट इज जनपदा मींस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन रूबर्ट्स डिफेंस सिस्टम इन मॉडर्न मैनेजमेंट इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिस्क मैनेजमेंट। It is a central administration place for decision making. So this is the Kautilya Saptanga theory जहां पे स्वामी सेंट्रल फोकस में है। देन अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोशा, आर्मी, एलए एंड मित्र। अब ये सप्तांग थ्योरी मॉडर्न मैनेजमेंट में 1970 में एक मैकेंजी नाम का एक्सपर्ट था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, इन्होंने उनकी 7S फ्रेमवर्क डेवलप किया है विच इज क्वाइट सिमिलर विद द सप्तांग थ्योरी। अब 7S फ्रेमवर्क ये 1970 में हमें उसके बारे में पढ़ने को मिला, बट एज फार एज दी सप्तांग थ्योरी इज कंसर्न दैट हैज बीन नरेटेड बिफोर 3000 years back. So that's why Saptanga theory is very important and it is still applicable. Now, these are the administration structure that has been narrated in Kautilya's अर्थशास्त्र। 22 प्रकार के सुपरिटेंडेंट और डिपार्टमेंटल हेड के बारे में डिटेल में जानकारी कौटिल्यज अर्थशास्त्र में दी हुई है, राइट। सो लेट अस एक्सप्लोर नेक्स्ट, दैट इज द राजमंडल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। द राजमंडल मींस सर्कल ऑफ किंग्स। अब देखिए यहाँ पे it is known as mandal. Mandal is a Sanskrit word and which refers to circle. Kautilya's describe circle of friendly and enemy state which can be surrounding the king state. अब देखिए यहाँ पे मंडल थ्योरी में क्या होता है कि राजा का राज्य सेंटर में होता है, आजू बाजू अलग स्टेट्स रहते हैं सर्कल के फॉर्म में, और उन स्टेट में राजा द्वारा ही अपॉइंट किए गए ऑफिशियल्स रहते हैं, अधिकारी रहते हैं कि जो उस स्टेट का मैनेजमेंट करते हैं, राइट। सो मंडल थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो रूल मैं बता देता हूं आप लोगों को, द नेबर प्रिंसिपल एंड द फ्रेंड ऑफ माई एनिमी प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पे कौटिल्य सजेस्ट दैट अ स्टेट्स इमीडिएट नेबर, हमारे राज्य मतलब हमारे देश के जो इमीडिएट लग के नेबरिंग कंट्री है, दैट इज एन अरी मीन्स एनिमी बिकॉज दे कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेस एंड टेरिटरी। The friend of my enemy principle. Conversely, the king whose territory is just beyond the immediate enemy is likely to be mitra, ally, because they share a common enemy. So these are the two very important principles that has been very wonderfully narrated in Kautilya's Rajamandal theory. So this is the pictorial representations of Kautilya's Mandal theory, that is center as far as the Raja is concerned, king is concerned, it is at the center place. And there are 7 concentric circles where officials of the king has been appointed and they manage their state in a significant manner. So these are the commerce and management concepts we can learn from Kautilya's Arthashastra, right from the administration to the risk management, and here from strategic management to the wealth management. And the last part of the session, because of time limitations, the very important part, that is funding opportunity from IKS division. So participants be alert now. So देखिए यहाँ पे 6 प्रकार के स्कीम्स के लिए आपको आईकेएस डिवीजन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक्सक्लूसिव डिवीजन है, जो आपको यहाँ से ग्रांट्स मिल सकती है। तो ऐसे 6 प्रकार के स्कीम्स है। एक है आईकेएस सेंटर, दूसरा है आईकेएस टेक्स्ट बुक एंड कोर्स राइटिंग मटेरियल, तीसरा है आईकेएस इंस्टीट्यूशनल इंटर्नशिप,
चौथा है IKS रिसर्च प्रपोजल, द फिफ्थ इज IKS पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप एंड लास्ट इज IKS माइनर। अब देखिए IKS सेंटर जो है इसके लिए आपको 20 लाख तक का फंड मिल सकता है, और IKS सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाई? बिकॉज थ्रू IKS सेंटर आप रिसर्च प्रमोट कर सकते हो, आप बुक लॉन्च कर सकते हो, आप आपका कोर्स लॉन्च कर सकते हो, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स IKS सेंटर के साथ एफिलिएट कर सकते हो। लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स आर देयर एज फार एज IKS सेंटर इज कंसर्न, एंड दैट इज अ वेरी फ्लैगशिप स्कीम ऑफ IKS डिवीजन, कि जो 2 साल का प्रोजेक्ट है और आपको 20 लाख तक का फंडिंग मिल सकता है। देन IKS टेक्स्ट बुक्स और कोर्स राइटिंग मटेरियल, अगर आपको IKS कंटेंट पे कोई टेक्स्ट बुक लिखना है तो इसके लिए भी आपको अच्छा खासा फंड मिल सकता है, और इसका पब्लिकेशन भी IKS डिवीजन ही करेगा। देन IKS इंस्टीट्यूशनल इंटर्नशिप, वेरी पॉपुलर, ये प्रोजेक्ट 6 महीने का ही है सिर्फ, और इसको भी आपको 20 लाख तक का फंड मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस स्कीम की ये है कि आप भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान का कोई भी स्टूडेंट ले सकते हो। आप अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है तो, अगर से फॉर एग्जांपल आपको ये प्रोजेक्ट मिल गया तो आप IIM से भी स्टूडेंट ले सकते हो, IIT से भी स्टूडेंट आप आपके अंडर में ले सकते हो, IISc से भी ले सकते हो, एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन एंड एनी इंडियन यूनिवर्सिटीज। देन IKS रिसर्च प्रपोजल, ये भी प्रोजेक्ट 2 साल का है और इसको आपको 20 लाख तक का फंडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। देन IKS पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, किसी को अगर IKS डोमेन भी PhD करना है तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा फेलोशिप मिल सकता है और अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। देन IKS माइनर, हम सब लोगों को पता है स्वयं और NPTEL, ये दो, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट MOOC प्लेटफॉर्म्स। तो अगर व्हाट वी कैन से दैट कि अगर मुझे स्वयं जैसा कोर्स डेवलप करना है एंड दैट इज बेस्ड ऑन IKS, तो मुझे यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट्स, ऑल स्टूडियो फैसिलिटीज, ये सब मुझे IKS डिवीजन की तरफ से मिलेगा और अच्छा खासा फंडिंग भी मुझे इस स्कीम में मिल सकता है। अब देखिए ये 6 प्रकार की स्कीम्स है, IKS डिवीजन ने इसे लॉन्च किया है। मतलब फ्रॉम इसके लिए अब कौन सी स्कीम एक्टिव है या फिर कौन सा स्कीम कब आने वाला है, आपको इसके लिए IKS की वेबसाइट देखना जरूरी है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो उसकी वेबसाइट है IKS.org.India। सो ये वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो, तो आपको यहाँ इस स्कीम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देयर आर 16 प्रकार के ऐसे एरियाज है जिसको IKS डिवीजन ने निर्धारित किया है, और वो 16 प्रकार के एरिया कंसीडर करके ही आप आपका प्रपोजल इस स्कीम के लिए ड्राफ्ट कर सकते हो। अगर आपने दूसरा एरिया सिलेक्ट किया अपने मन से, सो योर प्रपोजल आउटरीटली विल बी रिजेक्टेड। सो ऐसे कौन से 16 एरियाज है? तो दीज आर द 16 एरियाज। द वेरी फर्स्ट इज वैदिक फिलोसॉफिकल एंड कॉग्निटिव साइंसेस। अगर आपको पर्टिकुलरली स्ट्रेस मैनेजमेंट के इसमें कॉग्निटिव साइंस रिलेटेड है, उसमें अगर कुछ आपको नया कुछ इन्वेंशन आप कर सकते हो तो आप ये विभाग ले सकते हो। हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशन साइंसेस, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये विभाग ले सकते हो। देन कंटेम्पररी सोशल कल्चरल साइंसेस, लौकिक शास्त्र विभाग जैसे बोलते हैं कि कल्चर, कोई नया कल्चर आपको, मतलब एंशियंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कोई कल्चर, उस पर अगर आपको इंफॉर्मेशन आपको यूनिक लग रही है, नॉवेल लगे, तो आप ये विभाग ले सकते हो रिसर्च के लिए। मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस, स्पीच एंड लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक साइंसेस, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, इन सारे विभाग कंसिडर करके आप आपका प्रपोजल ड्राफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, दैट इज culinary, न्यूट्रिशनल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेस, एग्रीकल्चरल साइंसेस, वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए ये जो 9 नंबर का पर्टिकुलर डोमेन है, तो कृषि पाराशरा नाम का जो ग्रंथ है, अगर आप वो पढ़ते हो ना तो ये विभाग में आप आराम से प्रपोजल ड्राफ्ट कर सकते हो। देन गांधर्व विभाग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मैकेनिकल एंड डिजिटल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, सिविल एंड आर्किटेक्चरल साइंसेस, फाइन आर्ट्स एंड स्कल्पचर, केमिकल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंसेस, फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन एंड एजुटेनमेंट साइंसेस। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी ये पर्टिकुलर विभाग में आप आपका प्रपोजल अगर आपको ड्राफ्ट करना है, सबमिट करना है, तो ये 16 प्रकार के एरियाज, थीमेटिक एरियाज आपको कंसीडर करने हैं और आपको आपका प्रपोजल ड्राफ्ट करना है, एंड देन यू विल गेट द फंडिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द IKS डिवीजन। सो बिकॉज ऑफ टाइम limitations, I would like to stop here. So now the forum is open for the further discussions. Any question and answer sessions will be there. We will take it one by one. So the forum is open
for the discussions now. Thank you, sir. Thank And you so much. First of all, it was a really wonderful and insightful session towards this IKS. And really, you have provided the very insightful information with regards to integration of this Indian knowledge system in our curriculum. Participant, the forum is open for discussion, question answer session. If you have any question, queries, or some kind of observation with regards to this session, you can please mention down here. That will be really appreciable. Please, anyone. Yes, anyone has any queries or the questions? Hello. yes, sir. Yes, Dr. Rane sir, please. Hello. Yes. Yes, sir. Actually, now in the Indian knowledge system or scope of this field is very large. So, as I am faculty from science and technology, so which fields are more important for us, sir? स्पार्टन सर, एक बार रिपीट कीजिए फिर से. सर ये जो अब इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो फील्ड चल रहा है अभी, वो बहुत हाँ लार्ज सर. है सर. तो यस यस, मतलब ये सारे ग्रंथ तो एक ही बार में या कोर्स में नहीं हो सकते. नहीं हो वो सकते, राइट. कौन सा इम्पोर्टेंट सोर्स होगा हमारे लिए कि जो हम बता सकते हैं, ये पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कौन से होंगे शास्त्र जो हम पढ़ा सकते हैं? सर देखिए, अभी जो अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो एंशियंट सिविल इंजीनियरिंग जो जिसके बारे में हम लोगों ने देखा है, आर्किटेक्चरल साइंसेस एंड इवन Yes. एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हो सर. पर्टिकुलरली अगर आप आर्किटेक्चर की हम लोग अगर बात करते हैं, एंशियंट आर्किटेक्चर, जैसे मैंने अभी बृहदेश्वरा टेम्पल का एग्जांपल दिया था कि आज 1000 साल हो चुके हैं सर, वो टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो एज इट इज है. सो लाइक ऐसे, एंड इवन एग्जांपल ऑफ मेटलर्जी कि जो दिल्ली का आयन पिलर है, तो मेटल का तो ऐसे कौन सा कॉम्बिनेशन के साथ उस मेटल का मतलब फॉर्मेशन हुआ है कि जो रस्ट रेजिस्टेंट है आज भी. तो सर ये दीज आर द सम ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक एज फार एज योर पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन इज कंसर्न, सो वी कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. Yes, sir. Actually, now we are autonomous, so we have finalized the syllabus of this Indian knowledge system. ओके सर. It includes the introduction to the Indian knowledge system, यस यस Indian सर. literature, including philosophy and literatures as a Maharishi, Vyas, Manu, Kanad, that we have learned today before this यस couple of minutes. And यस. now we have added two units also for regarding the humanities and social sciences in Indian knowledge, as well as Indian mathematics and astronomy. Yes, sir. Sir, I have shared my contact number here in the chat box. So if you Yes, feel sir. you Yes, can sir. contact me on this number. Yes, Uh, sir. Yes, sir. yes, Definitely. I would like to share my contributions also. Yes, sir. Yes, sir. We are actually interested to share, take some contributions from some others. So that's why I'm asking that syllabus. Yes, sir. No, Sure, definitely. sir. Yes, yes, sir. Yes. Yes, anyone else? I think Professor Harshal Rane sir has grabbed that opportunity. Friends, see, being the autonomous institution, we have the lots of opportunities to integrate such kind of courses at your curriculum. Most important thing is that still we are focusing on some generic IKS courses. We have to move for some domain specific courses also. So in that point of view, definitely Professor Mayuresh sir will help out you. Yes, anyone else has any questions? Akre sir, is there any question? No, sir. Okay, so if there are no further questions, then we can conclude. Mayuresh sir, I think there are no Yes, sir. questions. So if you could permit, shall we conclude, sir? Yes, sir. Sure, sir. Definitely. Yeah. So on behalf of Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Garge Hello, Baba sir. Amravati University. Yes, Dr. Pawar sir, please. Sir, there is something in chat box, sir. Yeah. Yeah. Let me explore, sir. Just a minute. Yeah, sir, please. Um,
Yes, sir. Maharashtra, We can, sir, your question is, can IKS be converted into the research-based engineering innovations? Yes, sir, definitely we can convert this, because whatever knowledge that has been very wonderfully narrated, and जो example मैंने अभी मेरे sessions में share किए sir, right from the sustainable construction practices, then ancient water management system, then Indian architectural principles of Indian architectural. So these are all related with the engineering innovations, sir. So we can go ahead, sir, and you can really, if you are having this domain, so आप सर इस पे एक रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट कर सकते हैं सर. एंड डेफिनेटली अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होगा तो यू विल गेट द फंडिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द आईकेएस डिवीजन. हेलो हरजीत सर. yes, sir, yes. Oh, Yes, yes. Anybody else? Any question? anybody from participants? Yes, anybody else has any questions of the queries? No, sir. No, sir. I think there are no further questions. Yes, sir. Sure, sir. We can go ahead with the conclusion now. Yeah, sir. Yeah. So on behalf of Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Gadge Baba, Amravati University, and SND College, SND Institute of Technology and Research Center, Yeola, Nasik, I extend my sincere thanks to Professor Mayuresh sir for such a wonderful and insightful session. Rather than session, sir has provided deep insightful towards this IKS and funding opportunities also. How we should try to inculcate this different domain of IKS in our learning pattern, in our curricula, and how we should apply it for the different domain of research. Sir have elaborated this much this concept are a very simplest way, and also provide the funding opportunities. What are the opportunities in this domain that government should provide the funding in the recent era? Sir has also elaborated on that concept also. So we are really thankful to you, sir, for such a precious for such a insightful session. I once again extend my sincere thanks for your precious time. Rather than Sunday, I know that we have you are also busy with your preoccupied schedule, but you have provided your precious time and thought-provoking session here. For that, we are really thankful to you. On behalf of all these team gathering, I once again extend my sincere thanks to you. And with the kind consent of Professor Mayuresh sir, I would like to declare that this first session will be over here. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir, for this opportunity, and also express sincere thanks towards all the participants. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Participants, please stay be connected. Within 1 minute, we will start with our next session. Please stay.
Hello, Professor Ali sir. Hello. Hi sir, good afternoon sir. Good afternoon. Very good afternoon. Again, I am audible. Yeah, sir, you are clearly audible. Yes. Yes, sir, audible, sir. Arey wow, thank you. Shall we start with the session, sir? Sir, let me Yes, share sir. my screen. Shall we start with this session? If you could permit. Just a minute. Yeah, Let, sir. let- You can till that you can check the screen. yeah. Let me check my PPT. So Uh, yeah, I will start with I have to share the screen, na? yes, sir. Let me share entire screen. I should do, isn't it? Normally, also share system audio. Yes, sir. Screen is visible, sir. You can start your PPT. Till that, I will start the introduction, if you could permit. So, friends, good afternoon. Once again, as I have already told you that today's session have been split into the two different parts. First part, at most we have completed, and now we are moving towards the another part of the today's session. Friends, in this era of national education policy, very much important thing is that the innovative pedagogies are there. They are adopting some kind of pedagogies like experimental learning also is there, and number of things that we are trying to inculcate in our institution, in our daily classroom. So we're going to discuss in this session that is the outcome-based education and different innovative pedagogy and what are the learning strategies with the help of one of our renowned and scholarly expert in this field in higher education ecosystem, Professor M.S. Ali sir. Sir, first of all, I welcome on behalf of Garde Baba Amravati University Hygiene Mission Teacher Training Center and one of our collaborative institutions, that is SND College of SND Institute of Technology Research Center situated in the Yavlan district. Friends, Professor Ali sir is serving as a director at Anuradha College of Engineering and Technology, which is autonomous institution situated in the Chikdi, Buldhana, Maharashtra, India. Professor Ali sir is having over a of 4 decades of experience in this field of higher education. He is an engineer by training and teacher by profession. He is passionate for the teaching, research, and belief in the lifelong learning. Before joining this institution, he has served as a professor at College of Engineering, Badnera, also as a principal for Professor Ramle College of Engineering and Management, that is situated in the Badnera. He has also served as a junior engineer in Rashtriya Chemical Fertilizer, situated in the Mumbai. He has earned a PhD degree in the electronics engineering, MTech, and B in the same field. Being the researcher, Ali sir has published more than 100 research papers in the numerous research papers in the reputed national as well as the international index journals. He has the co-patent on his trade and for copyright, and under his able mentoring, he has guided 30 students for their PhD program. Professor Ali sir associated with different researches that include this Sant Galgi Baba Amravati University being the member of academic council as well as the board of studies and the chairman. He is the fellow of the Institution of Electronics and Telecommunication Engineering, also the fellow of Institution of Engineers and the life member of the Indian Society for the Technical Education. So, and this is a brief introduction with regards to Professor Ali sir.
I could tell many more things with regards to Professor Ali sir because he has spent more than 4 decades in this field of higher education, being the teacher, educational administrator, and many more. But today he will going to guide us on this very much important aspect, that is the outcome-based education and the innovative pedagogy. So, sir, let us warmly welcome Professor Ali sir once again here. Sir, you are warmly welcome, and now may I request you to please start with your section, sir, please. Excuse me, sir. Hello, Professor Ali sir. Hello, Professor Ali sir. Mute. Hello, Professor Ali sir. Yeah. Sir, am I audible now? Yeah, sir. Now you are audible, sir. Am I audible now? Yes, Yeah, sir. You are audible, sir. And what about my screen? Your screen, right now we are only seeing the screen, not a presentation, sir. Now. yes, Just sir. you Yes, can sir. start your Now it is presentation, visible. sir. My presentation is visible. Yes, sir. Now we are able to see your presentation also, sir. What is that? Case study, simulations, and research-based learning, driving Yes, student sir. success Yes, in sir. engineering Yes, education. sir. Yes. Yes. So, thank you very much, all the audiences. It's very nice to have interaction with, again, teaching fraternity from engineering and technology. I came to know that the renowned college at Yola, SNP College of Engineering and Technology, and all the fraternity from electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering, electronics, computer science engineering, IT, AIDS, and chemical engineering and technology, whatever. So I welcome you all, dear teachers. And as we are embarking upon a topic of outcome-based education, in particular, I would be talking about, as you can see my slide, I will go for presentation mode. And now, in between, you can please prompt me whether my things are visible as well as audible. So Sure, I sir. have now, it is visible. Yes. So nice. I will require your involvement in this presentation, not as others, but because we are talking about outcome-based education. I am going to give you a demonstration how to use AI for your own lecture presentation. So that will be really an outcome-based education to my teachers when I am investing 1.5 hour of time with them on case studies, simulations, and research-based learning, driving student success in engineering education. It is an outcome-based education perspective, typically in National Education Policy, NEP 2020. This has been given much stress, and it is need of our, as Ankit has rightly pointed out, in the era of AI, a teacher as well as a learner, both of them cannot remain indifferent from the advancement in this technology. As you know, it is more responsibility on a teacher to keep our students engaged for 60 minutes. I am intentionally given a pass so that you can ponder upon, yes, nowadays, this Gen Z, the generation, is so smart. They opened their eyes. There used to be a time we used to say, born in the golden spoon. This generation is born with smart technology. They have opened their eyes with smart technology.
So they are more technology savvy. So any teacher has to become a technology savvy, and he or she should become a facilitator, not treating student as a forced learner, but he should be an engaged learner. We should try to frame our teaching process as a facilitator, because all the knowledge, all the information is readily available on internet. So how can we make that knowledge and information consolidated into a 60 hours lecture or otherwise, which will be engaging to our students? And that is what we have named it as outcome based education perspective, with hands-on example across electrical, mechanical, civil, electronics, computer science, engineering, information technology, and AIDS. I am Dr. Ali, your host for this 1.5 hour, and I would like to engage myself with your esteemed presence. Presently, I am working as director, as rightly pointed out by, at Anuradha College of Engineering and Technology, which is an autonomous institute at Chikhli, Buldana. And we are having chemical engineering, mechanical engineering, electronics and telecommunication, computer science engineering, IT, and AIDS as programs. In UG, we have mechanical engineering, then computer science engineering, and chemical technology, as well as robotics and automation as our PG program. We have PhD programs in mechanical engineering, in chemical engineering, in chemistry, as well as in electronics and telecommunications. So, with this background, let us embark on our today's task. What I am going to speak about is why there is a need of innovative teaching methods under OBE, outcome-based education. We will speak about some case studies, simulation, and research-based learning with branch-wise engineering examples, which you can take as your task, and maybe as a homework out of interest, you can experiment. Okay, oh, if this is the way I can utilize the technology for preparation for my own classroom application, that will be a real deliverable out of this 1.5 hours of deliberation. How these activities are measured and mapped to course and program outcome. I am giving you an opportunity to test me. I am being examined by you, the august audience, that whatever outcome-based education, practical, hands-on, I am going to demonstrate here. You evaluate how effective that demonstration was, and then you can imitate the same methodology for preparing your lecture hours, and then making your lecture also very engaging to the students. So it is not going to be a passive listening. I would very much like that you try to understand the basic theme about this outcome based education, and what are the innovative teaching methods in the advent of technology and in the era of AI based teaching learning process. And then I would like to have you a hands-on activity to design your own classroom application as a lesson plan and delivering to your students by using one of the very popular and very effective AI tool. What we will cover is, we'll compare what is traditional versus modern outcome driven teaching. We'll look at what is the significance of case based learning. We will draw some engineering example across all the branches one by one without much ado on that. Simulation based learning, what are the tools and branch wise use cases. Then we will look at research based learning, capstone projects, general mini project examples, then integrating all these three within an outcome based education framework. And finally, how can we measure the impact, and we can gather the feedback from our students, so that
we can ourselves judge effectivity of our teaching learning process. Please understand that though we commonly call it as teaching learning process, teaching is one process, learning is another process. It doesn't mean that when I am teaching, the student is learning. Please understand. When you are delivering a lecture in a class of 60 students, at the end of the lecture, if you take the feedback immediately, you will find hardly any one particular student has understood each and everything what you spoke for 60 minutes. What it proves is that when teaching is going on, it does not mean that learning is also simultaneously happening. And likewise, when there is learning happening, it doesn't mean that some teaching is going on. Otherwise, you understand, in your early days, in our childhood days, our mother has taught us by taking blackboard and chalk stick, our mother tongue. How did we learn that? How did we learn walking? How did we learn speaking, a language speaking? These are the natural intelligence. This is the natural intelligence. Walking is a natural intelligence. Motor action is a natural intelligence. Listening and understanding is a natural understanding. Natural language speaking, natural language generation, they are all natural intelligence. The same thing we are now trying to bring into machine by making it as artificial intelligence. So understand that when learning is going on, that does not mean that teaching is also happening simultaneously. What we want to achieve out of when we are inviting a class of 60 students for a particular subject teaching, we want not only effective teaching should happen, but then effective learning should also happen. And the purpose of this outcome based education framework is that how can we make teaching learning processes mapping to each other so that really some outcome is visible, outcome is measurable, and we can identify how many times you identify that you enter into the class, that time the student was not knowing this, and when I came out of the class, you are maybe misunderstanding that yes sir, I have taught this for whole hour. How many students have actually understood it, learned it? That you can identify yourself by completing this 1.5 hour my lecture, and there only you can identify whether my teaching was effective in making you learn some new skill, or the teaching was going one sided, there was no learning happening, or even if I was speaking something different, but what I was showing from there, you have learned something. So you judge yourself. Let us look at what is the difference between traditional versus modern teaching methods. I have intentionally not animated their slides because what I am speaking, I would like you to see context of that same on my slides. In traditional methods, the delivery is teacher centric. I go on speaking without bothering about whether the learner is learning or not. So that is teacher centric delivery. That is the reason we used to call it as lecturing. See, there is something known as tutoring. There is something known as teaching. There is something known as lecturing. All these three are the methods of teaching. You are teaching, you are tutoring, you are lecturing. You have to identify which of these delivery is teacher centric. All of them are teacher centric because you have not considered taking the feedback from the students, which has to get involved in active learning by making your OB aligned method as student centric.
ultimate our stakeholder is the student. So with that reference, traditional methods were teacher-centric delivery mechanism. Modern OBE methods have to be student-centric, actively involving the students in learning by doing activity. Traditional method was characterized by passive listening. At this moment, when I am speaking, you are passively listening, and it hardly, I am misunderstanding that you are listening. You may be hearing. Some of you must have kept the mobile phone aside and must have napped easily in the chair. Okay, some Dr. Ali is speaking and I'm enjoying by having a sound sleep. That is passive listening. And what are you note taking? The person who is sleeping, the listener who is sleeping, he is taking the notes, dreaming the notes. So in modern OB method, it is real world application of theory, because I have already initiated you. Okay, you have to see the demonstration, and that demonstration, according to the demonstration, you have to complete an assignment on your own, and you have to your own judge whether this particular 1.5 hour time you have wasted or invested. So assessment was limited to recall of theory. In traditional methods, exam system is memorization of that, rote learning. Whether student has understood it or not, no one bothers. If has jotted down whatever he has listened faithfully on a paper, when a question is asked, what is OBE? Give the long form of OBE. If you can replicate, omit, object-based education. Sir, I have understood it that, but I said, I mentioned it as outcome-based education. You have named it as object-based education, OBE. So assessment is limited to recall of theory. OBE is not object-based education, so I will use 0 mark. Anyone who has listened correctly and then he has written their outcome-based education. Yes. Someone could say, okay, sir, it is, someone may say OBE imagining, because he was dreaming at the time my lecture was going on. And at the end, I asked, write the long form of OBE. He may say that object-enabled e-learning. In OBE aligned method, assessment is through PO-PSO mapped rubrics, program outcome. And then we have program SO mapped rubrics. Outcome in traditional method, outcomes are rarely mapped to real engineering practices, because you prepare a lesson plan for 1 hour, bring a PPT, explain that PPT on the screen without bothering about whether the student is learning. Whereas in modern OBE aligned method, we have to build the analysis, design and investigation skills, and that is as per MBA graduate attributes. Why should we shift to innovative activity-based methods? As I said earlier, that today's generation is Gen Z. They have born techniques heavy. So it is very difficult to keep them engaged unless they are involved. And for that purpose, to increase the engagement, you have to shift on some innovative activity-based method. It has been identified that how much you indicate to a person how to swim, he or she will not learn unless you throw him or her into the pond of water and then allow him to put paddling and all.
So it is that you have to increase the engagement. When we say innovative activity-based method, it means that whatever theory you are delivering, immediately show its application, or otherwise ask the student or learner to identify what can be the application of this, and then let him generate that application. So innovative activity-based method will be increasing the engagement, especially in core engineering subjects which are pursued as dry: mathematics, thermodynamics, network theory, RCC design, typically from various fields. Thermodynamics comes from mechanical, network theory comes from our electrical electronics engineering, RCC design comes from, you can all observe, they are all very mathematical, very dry. How can we make it engaging? You ask the students any problem you identify with reference to thermodynamics. घर में प्रेशर कुकर मम्मी जलाती है, उसके अंदर कोई थर्मोडायनामिक्स होता है क्या? Ask him. Automatically, there is something going on there. Network theory, you can identify कि घर में फ्यूज चला गया तो लाइट क्यों बंद होता है. In RCC design, you can ask कि we are standing on a leg. We are standing on our leg. What kind of column it is? उसकी footing कैसी है? It is one-sided footing. Whereas when we are constructing a column, इसमें 4 types का footing क्यों होता है? Under that, you can talk about RCC design. Likewise, real life example. Out of turn, it came to my mind. So that is what I narrated. A subject expert in that field could identify better example, real life example, or you can invoke their own thinking process. When I am talking about network theory, or इसमें I am talking about resistance, capacitor, inductor, क्यों मैं an example of real life example, ये रूम में अपन बैठे हैं, यहाँ पे कोई RLC सर्किट का एग्जांपल बता सकते हो क्या आप? Provoke their thinking. So it will build critical thinking, and it will allow the students to think design-oriented problem solving. Design-oriented problem solving. When you ask the student to solve the problem, then he will automatically start thinking what is the possible solution and what are the possible mathematical methods or technological methods or empirical formula which will be applicable here. So it will be design-oriented problem solving expected by AICT, NBA outcomes, NEC outcomes, and all these ODE. It bridges the classroom to industry gap. There is a complaint normally. The other day only I attended one CII conference. It was a panel discussion on how industry and academia should interact to bridge the gap of AI application in industry. And their industry giants like Accenture, TCS, Infosys, then Global Logic, these people, and from logistic as well as from mechanical core industries, people were talking about how in this core area AI can be embedded. They are always interested in bridging the gap between classroom to industry. And by what? Through authentic discipline-specific scenarios. What are the real-life problems? They are from Accenture, the general manager from Accenture, Dr. Sachin Mohad was present. He said that can we inculcate in our student a inquiry of writing a white paper on a some live problem, and then presenting that to industry and identifying what is the possible solution. So it is going to bridge the classroom to industry gap, and that is possible only by
shifting to innovative activity-based methods of teaching also. It directly supports program outcomes such as PO3, design development. Those 12 outcomes we normally indicate PO1 to PO12. So there we have program outcome design development PO3. PO5 is modern tool usage, and PO12 is lifelong learning. We do not want, if we do not want students to be a one-time learner, we want him to be lifelong learner. Can we as teacher be away from that lifelong learning? Answer is blatant no. The role of research in pedagogy. Now 3 points I have indicated here: research, case study, and simulation. So these are the 3 methods which can be embedded into outcome-based learning with innovative methods, which will be really generating certain outcome as long as the performance of the learner is concerned. So role of research in pedagogy is it enhances teaching methods with evidence-based practice. Those who are the teachers of either mathematics, physics, chemistry, or any other engineering core subjects, or elective subjects, or otherwise, they will agree with me that whenever you make your learning or teaching taken from known to unknown, making evidence-based practice of teaching will make your teaching very effective. I will just give one example. I used to teach computer vision, one of the AI subject, to my PG students. What is the evidence-based practice here? Computer vision is one of the faculty of artificial intelligence, wherein we make the machine to have vision like a human being and understand the things. So what is the known and what is unknown? We are trying to calibrate the camera vision, looking by the camera, processing that, and very processing and identifying whether this image is of Shah Rukh Khan or Amitabh Bachchan. That requires intelligence. So how do I used to take them from known to unknown? I used to ask them, you close one eye and look at how many professors you are looking. I used to teach in physical class. Then I used to ask them, you close your one eye and look at me. How many Professor Ali you are looking? They used to say one, obviously. Then I used to ask them, you close your left eye and again look at me by only one right eye. They used to say, sir, only one Professor Ali. Now you open your both the eyes and now tell me how many Professor you are looking. Answer is one. I am taking them from known to unknown. This was already known to them. Then I used to ask, and I asked you also, if you have experimented just now, कि अरे हाँ यार, एक आंख बंद करके देखा तो हमको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट आंख बंद की है तो भी अपने को एक ही स्क्रीन दिखाई दे रहा है, and when I am opening my both the eyes, then also I am looking at one screen only. Then why nature has exaggerated by giving me two eyes and all the both the eyes in one direction only? If you locate the position of your ear on your face, it is on one right side, another on left side, whereas both the eyes on front side. How nice it would have been if you would have one eye on your forehead, सामने, और another on back head. तो आपको आगे पीछे दोनों दिखता था यार. Why nature has exaggerated putting all both the eyes in front only? Here comes. Now you replace each one of the eye by one camera. So you have two cameras and you take the photograph. After taking the photograph, you find that
अरे सर ये इसमें भी तो एक फोटोग्राफ अलग अलग आया, अलग अलग एंगल से आया, which is not happening in my eyes. There is only one image formed on my retina back. Why this exaggeration? This gives you taking from known to unknown. I am not going to provide you the answer for that. You identify yourself after this lecture is over. Then you go to Google, you see the Gemini or what is that, Chat GPT and all, whatever AI you are using. You place my question there. Why nature has exaggerated by providing us two eyes, when by closing one eye we get only one image, another eye we close, then also we will get one image, and both the eyes are open, then also we get one image. So why this exaggeration? Likewise, why my ears are placed 180-degree apart, and what type of sound we are getting in my brain when that sound comes from two different angles. So, enhancing the teaching method with evidence-based practice. I have given you an evidence here, real life situation, and then posing this as a problem. Immediately, those who are attentive, they must have started thinking, और आपको इंटरेस्ट आने लगा होगा, अरे यार, yes, something new the fellow has said, जो आपको मालूम है. You take the student from known to unknown and ask him or her to solve the problem. So it brings cutting edge domain knowledge like Internet of Things, electric vehicles, artificial intelligence, smart materials into the classroom. What are case studies and why to use them? As we have identified research, now we have another case study based learning. What are the case studies and why to use them? Case studies are real discipline specific engineering scenarios. Just now I have indicated you, you can take a case study of human eye, and how that human eye can be modeled mathematically to calibrate my camera, so that my camera, AI based camera, acts similar to my eyes. Interactive tool that bridges theory and practice. It is going to provide interactive tool that bridges theory and practice when we talk about case study, and it is framed around a decision. Either we indicate, oh, this technology is not possible, it is failure, or you can identify some design trade-off. Even today, if you see a colored camera, colored image when you are using your mobile, nowadays mobiles are less for communication. They are being made more for pictures, images, videos. You go to purchase a mobile, you ask your Gen Z, new generation, they will always ask about कि सर इसका इमेज कैसे बनता है और इंस्टाग्राम पे कैसा फास्ट अपलोड हो सकता है, ये बताइए आप मुझे. So case based studies or case studies, they are framed around a decision or failure or design trade-off. Why should we use them? Because it enhances critical and analytical thinking. It is quite possible that already built product is available. You give that product as a case study to him. Just in front of a screen, I am standing while speaking to you. So my laptop screen is visible to me. The same laptop screen is visible to you also. And my laptop is a Dell laptop, which is not having touch screen. I am using my mouse or I am using my keyboard. There is a possibility of generating a virtual keyboard on screen. But that virtual keyboard on screen is again to be operated by mouse. How can I give a case study to my student? यार ये existing जो screen का display है, उसको touch based कैसे बना सकते हैं? Give him a thinking. It will promote teamwork. Don't give
the problem alone to a person, one student, one learner. Ask them to form a group and promote the teamwork so that they can have structured problem solving. It is quite possible that one of the team member would be very good in material science, the other fellow may be very good in programming, other person may be very much interested in UI design. So all those learner coming together as a team may contribute, and then your case study can be very well solved, and they can come up with a decision that what are going to be a design trade-off. There can be, how can I convert my non-touch screen into a touch screen? Connects classroom concept to real world application. Case study ka advantage. Now I'm just giving you branch wise certain examples which we can, rather you can use as a case study. For electrical engineering, one authentic discipline specific case as per branch to open a case study session. You can devise your own. And why to devise your own? You give a smart prompt to your AI, it will generate several case studies for you. You can identify a group of students and give them one by one. Now, electrical engineering, power grid blackout analysis. You allow the students to study a large-scale grid collapse to identify fault propagation, rotation relay failure, and corrective SCADA measures. In mechanical engineering, you can have structural mechanical failure analysis, turbine blade fatigue failure, root cause analysis using stress, material, and maintenance log data. In civil engineering, building bridge collapse investigation, students evaluate the design, material quality, and construction supervisor lapses against IS codes. In computer science, information technology, software outage case study can be taken. A production system failure, flight control, or banking outage, analysis for design, testing, and deployment gaps could be done. In electronics and telecommunication, VLSI and embedded design trade-off can be identified as a case study. A chip recall case used to study power performance, area trade-offs, and verification gaps. In AIDS, ample algorithm-based case, bias case, a hiring credit scoring machine language model case used to analyze bias training data and fairness metrics. Hello, audible? Audible? Yes, sir. Any question? I find some some discussion. If there is any doubt, you can very freely ask. Or if I am going a little faster or slower, is that okay? Hello? Yes, sir. Yes, sir. It is okay. Should I continue? Yes, sir. Yeah, thank you. Thank you. Now, sample case study structure for any branch. This is the basic structure. You present a scenario, a real or realistic engineering decision, failure or design dilemma with incomplete information. Then you provide a data pack like drawing, specification, logs, standard like Indian standard or IEEE or AICTE, and constraints given to the student teams. Then provide the task, what they are supposed to do, diagnose root cause, propose remedial design, and justify trade-offs against codes or standard, and then provide the deliver. Ask them that they should generate a group report, or there will be viva defending assumptions, then assessed against a rubric mapped with the PO, program outcome. So this is a sample case study structure which will come as an outcome for our discussion. Likewise, case study based learning, what are the outcomes and key benefits? Outcome is that it builds analytical and root cause thinking specific to engineer failure modes. It fosters teamwork through structured group discussion and analysis. Leave the student, you simply watch them discussing, allow them to discuss across the group, within the group,
and let them explore. And why to make them sitting in the classroom if they can be taken to the field, sitting in the garden and discussing group together along with their laptop? Allow them. That is a best learning. Enhances subject mastery by linking theory directly to standards and real incidents. There you are not forcing them to learn a particular thing. The moment they are analyzing a problem, they will automatically identify, sir, ये particular problem को analyze करने के लिए which mathematical tool I should use. If he is not able to get answer from you, immediately he will put a prompt on his AI and then get the solution. और solution के बाद में उसको पढ़ेगा, वो समझेगा, and then he will try to apply. Let it be. It is quite possible that the same problem is given by him to ChatGPT, and therefrom he is getting the solution. Let that solution come, but then ask him in Viva to explain that solution. Student feedback consistently shows improved understanding and problem solving confidence. Today he is copying the solution, he is explaining the solution. Tomorrow he will be able to provide a solution, better solution. So that is the key benefit. Now we come to simulation based. One was research based, another is case studies based, and now we are at the simulation based learning. What are simulation and why should we use them? Role playing or scenario based tool driven exercises. Role playing or scenario based tool driven exercises. My very popular method of role playing while I used to teach computer network. Those who are from computing side, they know that in open network model, OSI model as we call, there are 7 layers of network. Physical layer, data link layer, transport layer, presentation layer, and application layer. There are 7 layers. And there takes place data transfer from one computer to another computer when data transmission takes place. Just now what is happening? From my laptop through internet, the data is coming to your laptop wherever you are attending or your mobile and all. So there is a computer network. All the machines or all the mobiles or all the laptops or machines, they are interconnected with each other and they are communicating with each other. So this communication at the technology level are layered in 7 layer model. Application layer, presentation layer, internet transport layer, internet layer, then data link layer, physical layer. What I used to do, I used to form group of 14 students. 7 students forming and at one computer these 7 layers, and another group of 7 students forming a layer of 7 layer of another computer on this network. So 2 groups of 7 students each, role playing, one physical layer, another data link layer, and another presentation layer, application layer, like those 7 persons on one side and 7 persons on other line, and each one of the layer was known about his or her protocols. So they used to play the role. Okay, when a message from one computer to another computer is going, thank you, how are you? Good morning, how are you? Suppose this message is being transferred from machine A to machine B over a computer network. Then what is happening at physical layer, data link layer, transport layer, internet layer, presentation layer, and application layer? So each one of the person who is playing the role of a layer would speak, okay, sir, this is my protocol coming up, and this is the header, and header 1, header 2, I am adding to that, and how this packet is formed. Then how it goes to upper layer, to upper layer, to upper layer, to upper layer, and how likewise it goes to
other computer, and where from how it is deciphered, and it is then shown to the user what are simulation and why use them, this page appearing. So that was role playing. It is scenario based. You can provide tool driven examples, exercises. It can be done in virtual or real time modeling of engineering systems. Virtual laboratories are available. There you can ask the student to simulate by using those virtual labs. Software, hardware in loop practice environment, they are available. IIT Kharagpur, IIT Kanpur, and I think IIT Delhi, they have got this hardware in the loop practice environment available. Why should we go for simulation and use them is they are immersive. They immediately get student or learner involved because it is experiential and hands-on learning. It builds decision making under realistic conditions. You cannot ask them to make assumption. You have to say कि नहीं ये message इतना ही है. You may say कि sir it is only thank you which is going from one machine to another machine, and there are 5,000 protocols which are coming in practice. Yes. Just imagine one particular letter on which you are writing thank you and putting it into envelope, sender's name you are putting left side, and your mobile number, and on right side your receiver's name and address you are putting, and putting it into a post office box. ये थैंक यू मैसेज जाने के लिए पूरा सिस्टम, जो पोस्ट ऑफिस सिस्टम, रेलवे सिस्टम, हाउ मेनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व टू टेक योर simple message thank you from one of your side to your another person, your beloved side. उसको आप सिंपली थैंक यू बोलना चाहते हो. हाउ मेनी प्रोटोकॉल्स आर एट योर डिस्पोजल. ये रियल लाइफ सिचुएशन जब आप उसको बताओगे देन ये सिमुलेशन बेस्ड है. सो सेफ एनवायरनमेंट फॉर हाई कॉस्ट एंड हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट. Suppose you want to simulate the pilot training or control system handling, or maybe some hazardous waste system, that can be simulated. In simulation, you can experiment on the parameters and find out the effect. So this is simulation based learning. Simulation based learning, some of the simulation example branch wise I have quoted here. Tool based simulation activities suited to a single lab session or module. एक single lab session में electrical engineering you can use either MATLAB or Simulink. Scilink is also available. Load flow and fault simulation on a power system. Students tune protection settings and observe grid stability. In mechanical engineering you can use ANSYS, SolidWorks, FEA for stress, thermal and vibration simulation of a machine component before physical prototyping. In civil engineering, STAD Pro, ETABS, seismic and wind load response simulation of a multi-story frame against IS 1893 provisions. Coming to computer science and information technology, you can have Cisco Packet Tracker. In computer network, NEC 3 के हिसाब से network design, protocol simulation, congestion control, routing failure and security attack scenarios. In electronics, you can have multi-sim and SPICE for amplifier and filter circuit simulation, comparing simulated versus bench measured responses, physical hardware. In AIDS, yeah, Gazebo, बहुत ही popular आज का, ROs और Python based machine learning sandboxes. GitHub पे जाके देंगे तो thousands of such sandboxes are available. You ask student to pick up any one of them, simulate robo navigation or model training simulation to study algorithmic design making, decision making. Sample यहाँ पे एक medical style simulation engineering version बताया है मैंने. There is a concept of nowadays those who are coming from AI side or computing side, having little background, today's era is of digital twin. You can create your own prototype as a digital twin
which will, as an app on your mobile, will always accompany you and keep on. A typical example of that, like a rudimentary example of that digital twin is your smartwatch. It is only one-sided. It is monitoring your heart rate, blood pressure, and how many steps you have walked, and how many steps are still remaining to be walked, and आपने भी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, all that. But you can have a better digital twin. So example is real-time digital twin fault injection exercise on a simulated power or process plant. Student diagnose the fault under time pressure using लाइव सेंसर डैशबोर्ड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मेडिकल स्टाइल सिमुलेशन करते हैं वहाँ पे. गो टू एनी मेडिकल कॉलेज, you find that their human body simulation tools are available physically as well as virtually, and then you can observe there. I have seen one of the full body anatomy simulated body available at Datta Meghe Institute of Higher Education Research Medical College, Wardha, Sevagram Wardha. So student diagnose the fault under time pressure using live sensor dashboard. Outcome is better system level troubleshooting skills student develops, increased confidence, stronger retention of protection and control theory, because he is looking at the theory in practice rather than mugging up and trying to recall. Our brain always remember the things which gets associated with something. You see, if anytime you want to recall something, you start thinking that way. Okay, oh, at that time where I was, what was the time, when, who was with me, who was together, who was speaking, what was speaking, I was on the road, I was in the restaurant, I was delivering the lecture, something. So you try to associate. You see, your brain remembers the things by association. Absolute yaad nahi rakhta ho. Otherwise, you try to remember anything, absolute, and you see what happens. The moment you try to remember anything, you will come to know, अरे ये अली सर ने पढ़ाया था आपने. It is that. Or this I saw on Google. और this I saw, ये सिमुलेशन था. अरे यार इसका मैंने वो देखा था, क्या शॉर्ट देखा था. Or there was a video, or there was a YouTube, something. That is how your brain remembers. So simulation based. There are challenges in implementing simulation. What are those? Resource intensive. We need licensed software. ANSYS का, MATLAB का, ETABS का licensed software. Then we have hardware lab infrastructure and technical support needs. We have steep learning curve. As a first-time user, as a teacher yourself, you have to first understand that Simulink, how to use it. Then only you can make your students learn how to use them. And then solution is that low-cost open source alternatives are available. For example, Octave है, FreeCAD है, NS3 है, OpenFOAM है, Scilab है. Industry and MOU based access to license. Yes, there are companies, CNC based companies, CNC की companies, they provide their simulator free of cost for academic purposes. They can be. So industry and MOU based access to license tools, you can have peer-led simulation champions within each department. Why not to develop our own simulation champions within our department by giving a project-based learning to our students? That research-based learning may finally we come back to student engage in inquiry and original investigation. First was case study, then simulation-based, then research-based learning. Active learning through independent or team mini projects often culminates in a capstone or major project. And this is research-based learning is very much alive nowadays because of advent of AI.
in your region, you give geography, you give demography, you give population demographic distribution to AI, give your engineering background, and ask it, what are the live problems you identify here? For example, when I joined Anuradha College of Engineering and Technology as director, I wanted to give project-based learning to my students. Don't get surprised. I am basically a teacher. Even if I was entrusted with the responsibility of director, then I teach one subject. And there I identified by using AI, which to my students also I said, you also float the same prompt on your AI and identify what are the area of research which requires immediate solution by an engineer in this region. We found that live problem there is of hard water area, Chikri area demographically, population is very high. Most of the land is farming land. Main is the agriculture and potable water, drinking water का problem है कि it is hot water. More than 500, 600, 900. The test which we carried out, it was having 900 BD. So immediate solution is to identify most of the in cities, most of the RO plants are there, in which 50% of water gets wastage. We identified that problem and we started embarking on a solution, possible solution, that what can be better solution than RO. Reverse osmosis करने की बजाय दूसरा कोई मेथड लगा सकते. Is there any other method of natural filtering? So why incorporate it? It encourages deeper conceptual understanding. I remember the moment we identified this problem and we invoked with our chemical engineering department as well as chemistry people, they came up with so many solutions, and then we started working on feasibility, and maybe this year we are going to have a patent on it, and then we are going to have a startup. आपको जाना वैसे ही है. Don't burden it on the institute. Prepare a team of students who can innovate, patent something, because when we approached our startup MOU incubation center, they said, sir, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपको तो भी इनोवेटिव पेटेंट चाहिए. Based on that patent, we can register you as a startup, and then we will give you seed money to the tune of 15 lakh for starting your plant. So what happens? Research-based learning, it encourages deeper conceptual learning, fosters critical analysis and innovation, prepares students for real-world, open-ended engineering challenges. उस रीजन का immediate challenge जो हमारे को दिखाई दिया वही है. That is how it is. Research-based learning examples branch-wise. In electrical engineering, you can think about smart grid and renewable integration. Student research solar wind integration strategies and present a mini grid stability study. Why we should not have a small wind turbine right on rooftop? सोलर का तो कर रहे हैं हम. सोलर के साथ में सोलर टॉप रखने के साथ साथ कैन इफ इन माय रीजन, जो बुल्ढाना एरिया है वो हिली एरिया है, वहां पे विंड वेलोसिटी इज हायर देन प्लेन एरियाज. सो व्हाई वी कैन नॉट हैव स्मॉल wind mills right on rooftop and generate a small electricity? ट्रेडिंग मशीन, एक्सरसाइज के लिए ट्रेडिंग मशीन वी आर यूजिंग. कितनी एनर्जी अपन वहां पे वेस्ट करते हैं ट्रेडिंग मिल पे. वो ट्रेडिंग मिल को अपनी बॉडी के मूवमेंट से टरबाइन से जनरेट कर दो, क्रिएट कर दो, लेट इट रोटेट, and then it will generate electricity. In mechanical engineering, we can have additive manufacturing and advanced materials. Research projects on 3D printing components, strings and conventional manufacturing. Civil engineering, I have seen 3D printed components at that
deemed university Varda, they are using 3D printing for dentures, ये दांत बनाने के लिए. Dentists, they replace our teeth by artificial teeth. Why 3D printing material cannot be created and then we can have that dentures manufactured out of 3D printing? That could be. Civil, they have patented it. Don't look at me. ये आप कुछ तो भी लग रहा होगा यार अली सर क्या कुछ तो भी जादू की बातें बता रहे हैं. They have patented it. And वो they have not only patented, Siemens या किसी टेक्नोलॉजी वाले से उनका लाइसेंसिंग भी हुआ है. And if I am not wrong, I think it was that project only which is funded by Medical Council and Research India, Indian Council for Medical Research. उनसे उनको 1.36 करोड़ का ये मिला है, फंडिंग मिला है. Coming to civil engineering, sustainable and earthquake resistant construction. Research on alternative material like flash, recycled aggregate. Flash के तो bricks बनाना शुरू किया है ना. Likewise, you can think about recycled aggregate and seismic detailing. Coming to CSIT, computer science, engineering and information technology, AI-based cyber security. One of my PhD candidate has replicated human body immune system into a computer security system. उसके 2 पेटेंट है उस पे. Dr. Vinay Rajguru is his name. He is presently working with BHRISO University as associate professor. He did his PhD under me on his area of interest was cyber security. So he came up with the problem. I said, cyber security के लिए, sir, I want to devise some new algorithm. I said, immune system of body, human immune system की study करो और उसको replicate करो in computer network. We could get 2 patents on it. Real life situation. Coming to electronics, IoT, hot cake, Internet of Things, and 5G sensor network. Research on low power sensor design. सब में बड़ा आज का problem है power. There has come a concept of tokenomics. I will repeat. Tokenomics. Token का economics. What is that? ये चैट जीपीटी जो अपने को लगता है फुकट में यूज कर रहे हैं अपन. I use the term फुकट because it appears to us we are using it free of cost. What cost is there? वो डेटा सेंटर का पावर कितना कंज्यूम हो रहा है? Why it is said that? I don't know whether how much proficient you are in prompt engineering, but if you have seen the direction indication by any efficient prompt engineer, he will say, okay, don't put please or thank you in your prompt. क्योंकि वो टोकन बन जाता है. Please is 1 token, thank you becomes 2 tokens, और ये टोकन की कॉस्ट लगती है. Research on low cost in the sense it goes in terms of power. See, whatever prompt you have given, that ChatGPT has to remember the prompt as well as response till the time you remove it. Where it is stored? It is stored in some data center, and that data center has to be alive 24/7, powered continuously. There is a hot cake on low power sensor design and communication range optimization. So that goes. Coming to AIDS, explainable AI and bias mitigation. अभी आपको कितना भी लगता होगा कि यार ये चैट जीपीटी, समटाइम्स यू कंप्लेन, ओ सर ये चैट जीपीटी ने तो ऐसा आंसर दे दिया. अरे भाई उसको जो पढ़ाया वही आंसर देगा. वो आपको जो मालूम है उसके ऊपर ही आंसर दोगे ना आप. Recently they have become generative AI. Earlier they were fixed AI, grounded AI थे वो. Explainable and AI bias mitigation. AI भी bias रहता. Don't consider. Those who are doing research in AI, this LLM, large learning models,
they will know and they will understand कि as a designer, how I make my AI application, I can very well bias it. That is a different issue. I will not speak on that because that is altogether a different issue. तो explainable AI, उसको आप explainable बताइए. You have given me this answer. Why? Tell me. Where from you brought? And you can mitigate the bias. Sometimes you find that आपने उसको एक ही टाइप के 10-12 प्रॉम्प्ट दिए तो इट गेट्स योर प्रोफाइल. उसको समझ में आ जाता है कि यार ये बंदे को कौन सा आंसर दिए तो आई कैन प्लीज हिम. सो वो उस तरह से फिर काम करना शुरू करता है. 11वें-12वें प्रॉम्प्ट में आपको पता चलेगा कि आपको जो आंसर चाहिए वही देता हो. इट हैज बिकम बायस्ड. यू डू नॉट वांट बायस्ड आंसर. समटाइम्स मैं तो सब्सक्राइब हूँ, ये फ्री वाले में ज्यादा होता है. जो फ्री सब्सक्रिप्शन रहता है अपने को लगता है फ्री मिल रहा है, वो फ्री मिल रहा है, वो आपको he is fooling you. Sometimes the moment he identifies your profile, he will give you biased answer which you can please my master. It is like that. It will look at, अरे what my master is asking me, ये उसको कैसा आंसर चाहिए रहता है, ऐसा वैसे आंसर देगा. 2 times when I was using, I once scolded it. I very clearly told him, you are becoming idiot and trying to please me. Give me an unbiased opinion. फिर कैसा सीधा होके उसने बताया कि ओह आई एम सॉरी बट व्हाट यू हैव आस्क्ड इट इज योर प्रोफाइल दैट आई हैव गिवन यू द आंसर बट एक्चुअली प्रैक्टिकली इट इज लाइक दिस सो यू हैव टू बी कॉशियस ऑन इट. इट इज दैट. तो AIDS में आप रिसर्च बेस्ड लर्निंग में एक्सप्लेनेबल AI रिसर्च प्रोजेक्ट ऑडिटिंग ए डेटा सेट ट्रेनिंग डेटा सेट आपने उसको क्या दिया, उतनी ही ट्रेनिंग दी उसको. अगर आपने हेलीकॉप्टर चलाना सिखाया तो कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू ये फाइटर पायलट? आपने चलाना सिखाया उसको हेलीकॉप्टर और उसको आप फाइटर जेट पे बिठा रहे हो. तो वो डेटा सेट क्या था, वो डेटा मॉडल क्या था? सो इट विल बायस एंड proposing fairness improvement. So these can be research based learning examples. इंजीनियरिंग कैप्स्टन प्रोजेक्ट जो रहते फाइनल ईयर के डिलीवरेबल जो प्रोजेक्ट रहते, यू कैन हैव रिन्यूएबल एनर्जी कैप्स्टन. स्टूडेंट रिसर्च एंड डिजाइन ए हाइब्रिड सोलर विंड माइक्रोग्रिड फॉर ए रूरल फीडर. सी हाइब्रिड सोलर विंड जो मैंने अभी बताया आपको, सोलर भी रखो विंड भी रखो, एक माइक्रोग्रिड बनाओ रूरल फीडर के लिए. 4-5 घर या पूरी अपनी फ्लैट स्कीम या इंडिविजुअली एक झोपड़ा, कोई इशू नहीं. खेत में अपने को ये पंप रन करने के लिए चाहिए या फिर अपने को रात में लाइटिंग के लिए चाहिए या सायरन के लिए चाहिए या ये ड्रोन चलाने के लिए चाहिए आपको. दोज आर द एग्जांपल नाउअडेज. विजिलेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ फार्म हाउस. कुछ नहीं, एक ड्रोन लगा दो और उसको रात भर घुमाओ, वहां पे साउंड भी करता रहेगा, वो कुत्ते की भी आवाज निकालेगा, शेर की भी आवाज निकालेगा. दैट कैन बी. Students conduct literature review, techno-economic analysis and simulation-backed sizing. Why I have given you the example of that drone at our, we have Center of Excellence at Drone Technology at Chikli College of Engineering and Technology. And we are offering this kind of drone projects to our students. Mechanical, electrical, electronics के बच्चों को हम ये project दे रहे हैं. Wherein one of the student came up with an idea. He was from farmer background. तो ही सेट के सर हमारे घर में ऐसा इस तकलीफ होती है, तो व्हाई कैन आई नॉट डेवलप ए विजिलेंस ड्रोन विच विल बी मेकिंग नॉइस इन नाइट एंड उसके अंदर जुगनू के जैसा लाइट भी जलता है. वेरी नाइस, गुड प्रोजेक्ट. उसको पेटेंट करने वाले हैं. सो स्टूडेंट कंडक्ट दैट लिटरेचर रिव्यू, टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस, सिमुलेशन बेस्ड साइजिंग. Finding us presented as industry expert panel as part of final evaluation, or best thing is to either white paper generate करो या फिर patent generate करो और उसको licensing करो and make your intellectual property
really deliver you something. Benefit of research based learning ये है कि it develops critical thinking and independent inquiry. Encourages innovation. Several capstones evolve into patent or publication worthy work. It enhances technical communication and presentation skill for industry and panel review. And PO12, lifelong learning and PSO attainment for accreditation. ये अपना secondary है. Main concern should be our stakeholder, learner as a stakeholder. When he comes out, he should be able to demonstrate the attainment, whatever program outcomes we have identified for him during the course of 4 years of study of engineering and technology. Maybe after 1-2 years, when he goes works in industry, we can identify the attainment level. लोकल लेवल पे 1 साल में 1 सेमिस्टर के बाद अपन अटेनमेंट लेवल उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकालते, बट दैट इज ए डमी अटेनमेंट लेवल. True attainment level is his success or whatever, I will not say failure, his success or learning in the field when he physically goes into the industry. So integrating, now comes the final one. Individually we talked about case studies, individually simulation and individually research. Blended sequence या example power system course can take, blended कर सकता है. Case study, simulation, research blended together. Start with a case study to frame the problem. Use simulation tools to model and test the solution, and then extend it into research and capstone project for depth, and then create a prototype. For example, we can take a power system course, because I belong to electrical engineering. I will start with case study, a real blackout event. उसको simulate करो, MATLAB simulation से fault and protection study, and then research a mini project on smart grid resilience. Duplication कर सकते क्या, redundancy ला सकते क्या, without much cost. So how can we? Typically आपने देखा होगा अपने region में, I don't know at Yola, but I consider that Yola is a very similar kind of place like Chikhli. Don't anytime complain कि sir I am at a village place or I am a small place. Gone are the days. Forget about. अभी ये excuse चलता ही नहीं sir. Maybe you take it as whatever, but it is a bitter. कि saying oh I am at Badera, I am at Chikhli, ये तो sir remote place है. कोई remote नहीं है. Remote is advantageous now, because you get so many problems there which are unattended and they require a solution. And an engineer must be introduced as a problem solver. In my every year since 25 years, since when I am addressing, welcoming my first year student, day one I tell them that engineer means a problem solver. Engineer is a problem solver. He or she is not a problem creator. He is a problem solver. If I can identify a problem, analyze that, identify a solution, and generate that solution. So mini project on smart grid resilience can be. How these activities align with outcome-based education? Because ultimately, when we are talking about OB, when Dr. Atik called me saying, sir, we'd like to have your talk on outcome-based education, because it is indicated in National Education Policy, NEP 2020, NEP 2020 में है वो. So I said, I already delivered one very, I thought it to be nice. I don't know how much those people have taken. It was one of our autonomous polytechnic here in Amaravati, where I happened to deliver the same thing to polytechnic teachers. And it was face to face, I suppose. So I could see the faces. People could learn, our teachers could learn so many things from there. And some of them are actually utilizing also the same at polytechnic level.
So each activity is mapped to a specific course outcome and program outcome. Continuous assessment and reflection replace one shot रिकॉर्ड बेस्ड एग्जाम. ये रिकॉर्ड बेस्ड एग्जाम की प्रैक्टिस अपन ने बंद कर दी. ये रोट लर्निंग है, इसमें मेमोराइज करके उसने कितना टेस्ट किया. आई कंसिडर दैट he or she must remember, but what he or she should remember rather than he or she should understand. If you understand, when you understand, when you do you understand. I see, I remember, I do, I understand. So understanding comes by doing. So continuous assessment and reflection should replace one shot recall based exam. These activities with OBE focus shifting to measurable outcomes. जो Bloom's taxonomy में 5 layers है, memorizing, then understanding, then analysis, then synthesis, and then finally design. Analysis, design capability, and communication. These are the main measurable outcomes. It directly supports NAC, NBA, AICT accreditation, and nowadays it becomes the responsibility. Sir, your Yola college is a autonomous college? Can someone answer me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, then we have more responsibility. I must really congratulate you and your team of faculty as well as management. My sincere thanks to all of you people as well as your management and principal and directors, whosoever are behind this autonomy. Sir, this is the need of our non-autonomous colleges are going to die at their own death. It is very harsh statement, but then it is the bitter truth. Having autonomy means you have made two things. One, as a teacher, you have got freedom of teaching. As a teacher, you find that this is the need of industry. I must teach this subject this way, which I feel that it is going to be effective. So you have that freedom of teaching. And when we say it is choice-based credit system, open system, it is freedom of learning to the end user, our learner, our student. When we are conferred with the autonomy, you are a mini university. Understand? Academically, I am talking about finance. छोड़ दो. देखिए, if we are in a teaching profession, सरस्वती और लक्ष्मी का मेल नहीं होता. We are not here for earning money. Forget about. We are on a very pious profession. We want to use something which is going to remain after us. ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लगेगा आपको, और आप ये बोलेंगे कि सर टीचर लोगों को बस ऐसे ही चने के पेड़ पे चढ़ा चढ़ा के यार हमारे को 7 पे नहीं देते, डीए नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते. दैट इज अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी. उसमें नहीं जाना है अपने को. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट फॉर वी आर हियर. वी आर टीचर्स. Gurur Brahma, Gurur Vishnu. That is the responsibility on our shoulder. So, when we have embraced autonomy, not only we are providing to our teachers freedom of teaching, to our student learner, we are providing freedom of learning. On my college logo, if you see, I always insist my market manager to indicate Anuradha College of Engineering and Technology and Autonomous Institute dash freedom of learning. Because through autonomy, we would like to provide to our students freedom of learning. और वहाँ पे हमारे experiment है. My own subject which I am teaching, I allow my students to have open book test.
and for which I will tell you the students resist. Repeat. Open book test के लिए जब मैं बोलता हूँ, they says no sir, we want closed book. Then I say कि यार चीटिंग करने के लिए तुम्हारे को अच्छा लगता, मैं ओपन बुक दे रहा हूँ आपको तो आपको लिखना जान पड़ा था, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती. A 2 hours पेपर I give them 3 hours. यूनिट टेस्ट होता है 2 घंटे का, 1 घंटे का, सॉरी 1 घंटे का यूनिट टेस्ट जो नॉर्मल रहता है. I provide them 2 hours for unit test because it is open book. I indicate them question. I also indicate them page number 35 to 54. ये पेज के बीच में आपको इसका आंसर मिलता, पढ़ना पड़ता, नई जनरेशन के जान पड़ा था. You have to make them involved. So very nice. So it directly supports NBA, AICTE accreditation evidence requirements because it is the condition of autonomy that every 5 years you must go either for NBA or NEP and then prove your metal. So best is to go for this case study based, research based, simulation based, outcome based. So measuring impact कैसे रहेंगे? Now closing. Rubric based assessment of critical thinking and application. Direct COPO attainment tracking per activity. Then pre and post concept test around each module. Tracking progress आप क्या कर सकते हो? Portfolio of case studies, simulation reports and research log उसको बनाने के लिए बोलिए. Then let peer and self assessment components be included there. When I allow those students to go for open book exam, 1 hour ओपन बुक यूनिट टेस्ट जब होता है हमारा, वेरी नेक्स्ट आवर 1 घंटे में अगर बच्चों ने वो खत्म कर दिया, तो वेरी नेक्स्ट आवर आई शफल द पेपर्स अमंग देमसेल्फ ओनली. और उनको मालूम रहता है कि रोल नंबर 1 वाले का पेपर जाता है रोल नंबर 60 वाले के पास, रोल नंबर 60 वाले का पेपर आता है रोल नंबर 1 के पास. ऐसे उनको हम स्वैप करते हैं एंड ईच वन ऑफ द स्टूडेंट देन आस्क्ड टू इवैल्यूएट द पेपर. लेट मी टेल यू, एक भी बार रिवैल्यूएशन नहीं आया बिकॉज द स्टूडेंट वाज नोइंग कि यार मेरे पीयर ने इसको इवैल्यूएट किया है तो इससे बराबर ही किया होगा. टीचर के ऊपर डाउट रहता उनको, उनके फ्रेंड्स पे डाउट नहीं रहता. सो इट इज दैट ट्रैकिंग प्रोग्रेस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट पैनल स्कोरिंग फॉर कैप्स्टन वर्क. यस, इंडस्ट्री से आप लोग बुला के बताइए उनको, प्रोजेक्ट कंपटीशन रखिए, हैकाथन रखिए. नाउअडेज एट इंडस्ट्री लेवल they have started hiring from hackathon only. They themselves arrange hackathons and there they bring projects और वहाँ पे उनको इंटरव्यू करके they have adopted a different method of hiring nowadays. We have to go along with that. Student feedback and learning analytics, ये तो जरूर लेना चाहिए. We must take structured feedback after every activity from the student. Reflective journals encourage metacognition. Then feedback loops inform next iteration of the activity. उसका एडवांटेज है ये. लर्निंग एनालिटिक्स में यू कैन आइडेंटिफाई अटेम्प्ट पैटर्न्स. यार ये बच्चे ने कितनी बार किया था, वो पैटर्न में कब वो फेल हुआ, कब वो सक्सेस हुआ, कहाँ पे ही कुड आइडेंटिफाई समथिंग. टाइम ऑन टास्क एंड रूब्रिक स्कोर्स के बराबर कितना वक्त दिया था, विद इन दैट पीरियड ही कुड कंप्लीट. use data to identify at-risk students early. Safety precautions, adjust pacing and difficulty based on evidences. All this can go as learning analytics. When we talk about data science and data analytics, उसमें learning analytics is also one of the parameters. Only business analytics में ही data science नहीं लगता है. It is very much there. If there is a micro manufacturing or macro grid, likewise there are micro learning, micro teaching, feedback analytics, practical demonstration for faculty. अब यार ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया. ऑलरेडी 5 o'clock. तो फॉर्म ब्रांच वाइज ब्रेकआउट, आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर. सर व्हाट ऑल ब्रांचेस वी आर हैविंग देयर एट योला कॉलेज? Hello. Almost everyone. Everything, electrical engineering, mechanical, computer, civil engineering, all that. So what I am proposing, whosoever is the coordinator from your level,
form branch-wise breakout groups like electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering, computer science engineering, information technology, electronics, AIDS, and all. Each group drafts one case study, one simulation activity, and one mini research theme for a course they teach. Group map each activity to at least one course outcome, and then short group presentation followed by peer discussion on implementation and measuring outcomes. If you carry out this practical demonstration for faculty themselves, then indirectly you will learn how to use this outcome-based education based on case study, simulation, and research for our learners and students. So, concluding our key takeaways from today is case studies, simulation, and research-based learning together enrich student success across every engineering branch. Branch-specific, authentic examples make abstract theory concrete and industry relevant. Mapping every activity to COs, POs keep innovation aligned with outcome-based education and accreditation goals. Start small. You must think big, but you must start small. Pick one activity, simple, एक simple activity. वहां पे जैसे at Chikli we have identified very simple activity, और ये simple activity across the branches we have floated. कि यार अपने यहाँ पे चिकली में जो हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है उसको every engineer should come up with some solution. Simple small activity. Pick one activity, one course and one outcome to pilot this semester. ये सेमेस्टर का एक थीम बना लोगे भाई, hot water, sorry, hard water, not hot water, hard water. How that hard water problem of Chikli should be resolved. So for this semester, हमारा 2026 का अप टू दिसंबर का जो आउटकम बेस किया है हमने, फॉर अस इट इज दैट हार्ड वाटर प्रॉब्लम. So thank you very much for your patient listening. I am sorry I exhausted full time in only delivering. Here I had another अंकित सर कुछ थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं. जस्ट briefly I will indicate this to them and you can share this particular. Hello. Hello, sir. Actually, today is already Sunday. Oh We yes, have yes. to Chalo, first close ask करते हैं. participants. Close. Thank you very much. Now, Ankit, you can please conclude. Thank you very much for providing me an Thank you so opportunity. much, sir. Thank you, Thank you sir. so much, sir. Thank you so much. The presentation was really nice and very useful for us. And this perspective of outcome-based education, we have elaborated this concept through the various case studies and the real-time example, real-world example that we have already implemented. We have definitely will conduct another session and take your precious time to enlighten the participant on another hands or the another topic. So with this, I once again extend my sincere thanks to Professor Ali sir for such a wonderful and informative session on this outcome-based education. And with the kind consent of Professor Ali sir, I would like to declare that today's session will be over. Thank you, sir. Thank you so much. So And very nice. thank you, participants. Thank We you. will Thank you, meet sir. here and meet tomorrow. All you, the sir. very best. Happy to teach. Happy teaching.